अपनी वैदिक शिक्षा पढ़ी होती, वैदिक शिक्षा को कंटिन्यू किया होता, आज हम स्पेस साइंस में बहुत आगे हो। अरे पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है, सब हमारे महापुरुष लिख के गए। ऋषि भारद्वाज को पढ़ाया नहीं, पाणिनि को पढ़ाया नहीं, सुश्रुत को पढ़ाया नहीं, चरक को पढ़ाया नहीं, नागार्जुन को पढ़ाया नहीं, पढ़ाया किसको? राइट ब्रदर्स को, आइंस्टीन को। करते का तू दिवस खराब हो सर।
sir. कमलायतलोचनलोकपते विजयी मम वेङ्कटशैलपते कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी मम वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिते परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपलाहशतैः हरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमतादिकदानरता परदेवतया गदितान्निगमैः कमलादयितान्न परं कलये
कलवेणुरमावशकोपवधूषणकोटिमृतात्स्मरकोटिसमा प्रतिबल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतां न परं कलये अभिरामगुणाकरता शरते जगते कथनोद्धरति रमते रघुनायक हेलो हेलो थोड़ा सा हेलो हेलो अवनीतनया कमनीयकरं रजनीचरराजतमोभिगिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुत्वमन्यमहं न कथञ्चन Good morning, everyone. A warm welcome to all our dignitaries, respected guests, and dear students. Today, we are delighted to have with us Dr. Amol Neve, a seasoned professional with over 20 years of experience in business development and digital transformation. Please welcome him with a big round of applause. Now, I request Professor Sachin Bhagat sir, Chief Warden of SSGMCE Shegaon, to kindly welcome and felicitate our guest. Thank you, sir. Dr. Neve has worked with leading companies like Motherson Technology Services, Wipro, Mastech, Bristlesoft, and KPIT. He is skilled in enterprise applications and digital solutions, serving clients such as Audi India, Aditya Birla, SBI, Kotak, Axis, and IDFC Bank. With an MBA in marketing, a BE in mechanical engineering, and multiple global certifications, he blends technical expertise with strong business vision. Thank you, sir. It is an honor to invite Dr. Amol Neve to share his insight with us. Yeah. Yeah. Good morning. I'm audible? Okay. Good. Fantastic. Yeah.
So first of all, I congratulate to all of you for your academic journey to one of the best institute, Shri Sant Gajanan Maharaj College of Engineering, Shegaon, blessed with blessings of none other, Shri Gajanan Maharaj, run by Karma Yogi Shivshankar Bhau Patil, Vidya Amrutam Anushyate. And thank you very much for all the respected staff, principal, and all the concerned stakeholders of College of Engineering and Management to give me this opportunity to present on Indian knowledge system. Okay. So I pray to Lord Gajanan Maharaj and Karma Yogi Shivshankar Bhau Patil with his blessings to start with my session. As a tradition, we take the name of Lord Ganesha to begin with any kind of a session or maybe any kind of a activity, because this is as per our culture, as per our tradition, and as per our Vedas. So I devote and dedicate this to my Sadguru, Ganesh Yogini Param Pujya Sandhyatay Amrute, based out of Mumbai. And let's do a gajar which we normally do at home during the festivals. Let's chant Ganpati Bappa. Once more, Ganpati Bappa. Very good. So this has given you some energy? Yeah, because these three words are very important. And here we have Gajanan Maharaj, we have Lord Saraswati. Our text describes Lord Saraswati or Devi Saraswati or Sharda as Vag Devta. The words are through her. It's a blessing and she stays in our one of the chakras. So let's begin. Just a minute. Okay. So in next 1 hour or whatever, I think now it's exact 40 minutes. We will see essence of spirituality, what is Indian knowledge system, its applicability, our ancient scriptures, IKS for engineers, and now IKS for even management students also, because management students are also here. Okay, but anyways, everybody is engineer and management student. Then a modern day Gurukul. So this is the most important part which we will see today. So rather than what is IKS, I want to tell you first that why IKS and why we need to study that. Let's start from that. I'm not rather than usually we have to start with what is IKS or maybe what is the content, whatever we are talking about, what we are taking. But here it is important that why is very much important today. So let's see. Today's life, the 21st century, okay, how is this life today's? It is backed up with tremendous of struggle, tremendous of I can say tremendous of struggle, tremendous of load, tremendous of competition. You have to face this everything day in and day out, right? Okay, so you have done struggle to get admission over here. You have done some kind of hard work till now. What are your examinations you have done? So there is some stress, there is some acceptations from
your family members, from your friends and everywhere. Okay. So the life is full of desires. Everybody in this room, in this auditorium, want to achieve something. Okay. There is some desire, there is some need. So life is becoming like a mechanical. We are just doing the same activity day in and day out, and until now, and here further also. So daily you have to come to the classes, you have to attend the classes, whether you want to or do not want to, but you have to attain, because you have to complete the degree. Am I right or wrong? You have to say either right or wrong. Nothing? So is there, you want me to give third option? Okay. So we have to complete the degree, hence we have to do everything what they are demanded for. As a student, this is applicable to you. As a corporate job seeker, it is applicable for me. Or doing a corporate job, that I have to go to the office daily, do the task and activities. Same day, next day, same task, same thing. And this is not only applicable to you, me, and everywhere, everybody in this corporate world. Then coming to the other aspects, which is soul, mind and body. Human body is a combination of these three things. To digest this, let me ask you one simple question. Why you came over here to attend this session, or maybe other sessions also, not only this? Why you came over here? Any reasons, any thoughts? Because this is the most important slide, and I will take time on this slide to get into the topic of why IKS and why we need to study that, and why Council of Technical Education has started this. So any thoughts? What has came to your mind to attend these courses? Any simple thought will do. Whether it is right, wrong, don't matter. And this is a time for you to speak. Okay. Can somebody want to answer? This is orientation, right? So you want to get idea that what for the orientation is, what are the courses, which are the topics we want to study, some kind of an overview, right? This is one aspect. So this somebody maybe 70. Let me answer you on the behalf. So maybe 30-40%, or let's say 60% with thinking like that. Rest 20% might be feeling that okay, I have taken admission, so I have to do. Balance might be thinking that it is compulsory, so that's why I have to go. Right? So now I think I have to reverse my answer. 80%, 60% will are feeling that this is compulsory, hence we have to go and we have to do, because there is attendance. Now people are smiling. So this is coming, this is where the mind, okay, what comes to your mind is important, okay, and our body is governed by mind. Any action you do first come in your mind. Whether it is good, bad, that is another thing. So mind is the most important element. And it is very quick. It is governed with this pentaphysical aspects, which we call as Panchadhatu, Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash. Okay. There is effect of all these parameters in our body, because our mind and body works through soul, which is Parabrahma Swarup, which is unseen attribute. We can see only our body,
which is a seen attribute. But we can't see the soul, which is unseen attribute. Here, the bodies are different externally, but internally, the same soul is there in you also, in me also, and everybody in this auditorium, even outside also. And body needs mind to act, mind needs soul to act. Hence, soul is governing the mind and body. Another, uh, 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 actually, usually I like to be in you and take the sessions, which is my normal practice doing lectures. Don't worry, if you are taking sound sleep, I am okay. I will not disturb your sleep. Okay. Anyways, I think this is the first session, na? Okay, fine, no problem. So now let me ask simple question. This is not related to IKS. How many of you have done effort to increase your age right from childhood? Has anybody done some effort? Right, no? Right. So it has, the age increases automatically, okay, as the days passes. So there is no effort over there, okay. Is any of the system from the body, whatever the system are there in our body, is in your control? No, nothing is your control. Can you give action to your digestive system that, hey, digestive system, just don't work today? No. So the point I am coming to is that, why I am giving this just two simple examples. The body is governed by soul. This is the world class example of that. Our whatever is there, whatever the systems in our body are not in our control. We call this that this is my body, but it is actually not in my control. But you have to learn through this body only. Whatever the action soul is doing is through body only. So you have to take care of this body. You have to nourish it with proper food. This is externally. But internally, you have to nourish your mind. And that nourishment is through spirituality. And this is not related to any kind of a religion or dharma. That I will come to later. This is just an activity. Spirituality is way of life. It is just activity to have food and a thought for your mind, to do righteous activity, which is dharma. That is coming to think and act, wherein we are realizing and we are transforming ourselves to whatever needed, whatever our goals are. Then we come to philosophy. Then I will conclude also that why everything over here, which is devotion and self-knowledge. Devotion is the process wherein the mind gets its food through the aspects of spirituality, the activity what you are doing, the process what you are doing. Okay, so it might be anything, any activity which you feel, which during this activity my mind feels comfortable, or my mind feels calm and sensitive, wherein the desires are in control. My emotions are in control because the mind is restless in nature. You are physically over here, but where are you mentally now? What mental thoughts are going in your mind currently? Any idea? Okay, I will answer. Since you are not answering, I will answer. Some might be thinking that what happened at home today, or what I have to do after this session, something else.
This is the basic nature of mind, restlessness. And this has to be controlled through the spirituality aspect. Until now, the education, what we were doing, or what I have done, was only focusing on the external aspect, which was just knowledge dissemination, which was just giving you information, and you are just taking information, that this is the information and this is I have to do. You have to use that information in the industry tomorrow and work further. But nothing was focused on the most important element, which is mind. That how I need to educate my mind. Another important thing is that though our mind is restless in nature, we have Prerak Shakti, which is pervasive energy by birth. And this food for the mind, the spiritual activities what you are doing, increases or utilizes this pervasive energy or the Prerak Shakti, which will impact your work, which will impact your activities, and that will grow. It will increase your output to day-to-day activities. So the main intention of spirituality in life is implementation of the same to increase our day-to-day work activities and food for the mind, thought for the mind, good thought for the mind, which will nourish my body externally as well as internally. Now coming to four important elements which our spirituality or our culture talks about is dharma, artha, kama and moksha. Dharma means doing righteous act. What is right for the entire world is what dharma means, which is a big definition. It can't be covered in fact a day is less, even months is also less to explain that. But just in a one line. Then artha is wherein earning your day-to-day life, okay, which your mother, father are doing, okay, just in a simple way. Of course, artha is again a long way, but just to understand this part. Then the word kam means the thinking and the activity. What are the day-to-day activities you are doing as per applicable to your age? That is in this think and act. So for you, the think and act today is to complete this degree. With what are the marks, what are the parameters and everything. Okay. So this is as per the age. And the fourth word, moksha, which we call salvation, sakshatkar, is that I am part of this universe, or the ultimate truth, which is governing this entire universe, through this entire universe as form. And that ultimate truth, the energy in that ultimate truth, the pervasive energy, the same energy is in me also. That realization is nothing but salvation. Realization of that, which may take birth and birth. Ghade bogade sarvahi karma yoge. So in our earlier birth, which we don't know, we might have done some work or activity. It impacts the same birth and it will keep continuing till we realize that I am the same ultimate truth which governs the entire universe. This is essence of spirituality. And that's why Indian knowledge system has came. Western culture focuses only on calm and earth, on effort, whether it is right or wrong, and the monetary benefits. But Indian culture more thinks about dharma and salvation. If you do dharma and salvation properly, then artha and
काम will be done automatically. जैसे 3 Idiots मूवी में आखिरी में बोला जाता है, 3 Idiots मूवी तो सबने देखा रहेगा, अभी तो सब जन हाँ बोलो, हाँ चलो, कोई सोया नहीं है, गुड. I know that this might be difficult for you to digest. चलो अभी डायलॉग बोल दो, क्या डायलॉग था आखिरी में 3 Idiots मूवी में? कामयाब, कामयाबी, क्या डायलॉग था? बंदे क्या बनो? हाँ बोलिए बोलिए, भूल गए? हाँ हाँ, सो काबिल बनो. So what I am saying is that अगर आप काबिल बनते हो तो कामयाबी अपने आप आपके पीछे आ जाएंगी. So if you stick with spirituality, the rest will follow to you, because that aspect is coming from Sharda Devi, that aspect is coming from Ganpati, whatever it may be. Okay, so again another important point which I have to mention is that there is no aspect of religion in this. Okay, there is no aspect of religion. What is religion? Religion is only the process or the steps as per your convenience to do, as per your liking to do, to understand that I am part of this universe, or I am the part of the same ultimate truth, Aham Brahmasmi. So that is religion. Religion doesn't mean what we are talking about. It is neither related to the names which are there today, which you know, which I do not want to talk, neither it is related to caste with caste also. Because in everybody over here and in the entire world, the soul is only one. It is not different. So what are the words I am using over here while explaining you? Okay, these are not entitled to religion. These are entitled to knowledge, jnana, for your mind, for your soul, which is coming from soul but for your mind. So when I talk about IKS, the happiness, well-being and values, peace, positivity, courage and wisdom, these values, these elements will help you to transform yourself, to do the self-transformation and achieve your goal externally as well as internally. Whatever the situation arrives, you will able to overcome that with peace, positivity and happiness. Because happiness and sorrow comes together. You go to, I will give simple example. You go to a good hotel to eat food. You find food is good and then you just keep ordering. Okay, and at the end, when the bill comes, what happens? When the waiter comes with the bill, what happens? You don't realize that I ordered so much and the value is increased so much. You have to pay it now. Okay, that's why we used to identify somebody to give party, right? Okay. So, happiness and maybe the sorrowness will follow each other. So, the essence of IKS is to make a man-making individual, which Swami Vivekananda has mentioned. And that is our idea of education. So be success externally, that will be there, of course. But you have to think internally for your mind also. And that's why we say Indian knowledge system. Now we will see what is Indian knowledge system. Why? So understood why it is there is for your growth and positivity, for your self transformation, which will take you at a kind of a top ladder when you move to the industry or you want to do the entrepreneurship. And every top businessman, all the individuals are following IKS. We only see their external lives.
of top businessmen. Any businessman you take Ambani, you take Ratan Tata, we only see their external lives, but we don't see their internal lives. If you take look on their internal lives carefully, then you will see they are following IKS only. So now let's see what is IKS. So IKS is combination of Parampara, Drushti and Laukik Prayojan. Okay. So here that Parampara includes what is the context, Drushti is in terms of the future and Laukik Prayojan is benefit of the entire world. We are not only talking about our country, we are talking about benefit of our entire country, entire world. So it includes different vidyas and kalas, which are n number of areas. So we say 64 vidyas and 64 kalas, and many more that. Okay, but to tell you in terms of applicability, that how it is applicable. So it is applicable in the terms of philosophy, architecture, grammar, mathematics, astronomy, shipbuilding, engineering, metallurgy, chemistry, management, strategy. Entire aspects, whatever we are learning, are applicable in terms of IKS, mining, trade, commerce, wellness, EQ, IQ, and everything, everywhere. It is applicable. This realization has came now. That is the only thing. And this you should know, because this is now, it will be started in the industry. So we will see how it is linked, which are the areas are there. Okay. So at the end, whatever the aspect we have studied until now, or whatever aspects you are going to study, these are already included in IKS, which was written 1000 years ago. So IKS is a amalgamation, is a combination of all this text, all these parameters, which has been written thousands of years ago, and we are referring it now for the benefit of the entire world, and this is accepted by entire world. Now let's hear thoughts on IKS. You know this person? Loudly? Perfect. Very good. So I request technical team to play video number 1, that what he feels about IKS. Now you go through the video and then I will talk that in your syllabus these names are not mentioned. What is he talking about? I will tell you why it is not mentioned. सचमुच में पंडित सचमुच में पंढरपुर वारी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। साथियों, आषाढ़ी एकादशी जो इस बार 23 जुलाई को थी, उस दिन को पंढरपुर वारी की भव्य परिणति के रूप में भी मनाया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का एक पवित्र शहर है। आषाढ़ी एकादशी के लगभग 15-20 दिन पहले से ही वारकरी यानी तीर्थयात्री पालकियों के साथ पंढरपुर की यात्रा के लिए पैदल निकलते हैं। इस यात्रा जिसे वारी कहते हैं, में लाखों की संख्या में वारकरी शामिल होते हैं। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे महान संतों की पादुका पालकी में रखकर विट्ठल विट्ठल गाते, नाचते, बजाते पैदल पंढरपुर की ओर चल पड़ते हैं। यह वारी शिक्षा, संस्कार और श्रद्धा की त्रिवेणी है। तीर्थ यात्री भगवान विट्ठल, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल गरीबों, वंचितों, पीड़ितों के हितों की रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां के लोगों में अपार श्रद्धा है, भक्ति है। पंढरपुर में विठोबा मंदिर जाना और वहां की महिमा, सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद का अपना एक अलग ही अनुभव है। मन की बात के श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि अवसर मिले तो एक बार जरूर पंढरपुर वारी का अनुभव लें। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम, अनगिनत संत
महाराष्ट्र में आज भी जन सामान्य को शिक्षित कर रहे हैं, अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ने की ताकत दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर कोने में ये संत परंपरा प्रेरणा देती रही। चाहे वो उनके भारूड हो या अभंग हो, हमें उनसे सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। अंधश्रद्धा के खिलाफ श्रद्धा के साथ समाज लड़ सके, इसका मंत्र मिलता है। ये वो लोग थे जिन्होंने समय समय पर समाज को रोका, टोका और आईना भी दिखाया, और यह सुनिश्चित किया कि पुरानी कुप्रथाएं हमारे समाज से खत्म हो और लोगों में करुणा, समानता और शुचिता के संस्कार आए। Thank you. So our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, he was talking about the Varkari Parampara. We are born in Maharashtra or staying in Maharashtra, whatever it may be. The son of Maharashtra are important. Okay, he has already taken the names, he has already mentioned. Now in your syllabus, these names are not there, but of course, there are other aspects are there, which of course we'll cover. But this has been included in the pre-primary level for the children's. Tukaram Gatha, Eknath Gatha, then Samartha Ramdas Swami's Manachi Shlok. These have been included in the pre-primary level. Okay. Then second, okay, just is the presentation mode on? You can just okay. So I will just get the entire names now. The second, you know the second person, this one? Any idea? This is not working. This one, you know him? Who is he? Any guess? Nobody knows him? You know Param computer? Param supercomputer? Nobody heard about Param also? Yes? Okay, so who has invented Param? Okay. So he has invented Param supercomputer. He is Dr. Vijay Bhatkar. He is born in a small village at Telara near Akola. Okay. So, yeah. So his thoughts on IKS include, it helps to answer me who I am and how to control my mind. And he has saved lot of data, our army, navy data, to be secured in our own servers. Because all the data resides in server, the Param supercomputer what he has created. And he is working in lot of projects like that. And he is the brain behind NEP 2020 and IKS. Still at the age of 75 plus years, he is still working. So I will not take all the names over here, okay, but there are many, Dr. Vishwanath Karad, then Mohanji Bhagat, and many more. So even this I kept in terms of the education aspect, okay, like in terms of music, Sridhar Phadke, okay. So he feels that classical music is there in IKS. Sudha Murthy feels that IKS is like a mantra for her. Then Vinayak Damodar Savarkar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, he is Yashwantara Chavan, politician, and earlier Chief Minister of India, Mr. Gokhale. Everybody feels that IKS is well-being for the individual. You know this guy? Loudly, please. Still not, I haven't heard. Loudly, please. Good. So why this is photo over here? Has anybody listened Sachin Tendulkar talking about IKS? No, you know him, na? So
How many people plays cricket from over here? How many students plays cricket? Very less. Okay. Rest, nobody plays this. Very less. I thought that all the hands should go up. So nowadays you are just playing on the mobile, or the people who have raised the hand, they are also playing on mobile. Yes. Yes or no? Achha, you are going to playgrounds or you are just on the mobile? Okay. So Sachin Tendulkar, what he has said about cricket during his last speech, what cricket is for him, cricket for him as is what he considers cricket as. He has mentioned in his last speech at Wankhede Stadium at Mumbai that this cricket pitch or this distance is like a temple for me. Okay, he has mentioned that this cricket pitch is like a temple for me, and his cricket bat, okay, the cricket bat is, so we call him what? God of? Louder please. We call him as a god of cricket because for him cricket is considered as a spirituality. That is what Swami Vivekananda has mentioned, that think an idea, develop an idea, and let your all nerves think to develop and fulfill that idea. Stop not till your goal is achieved. This person 24/7 lives in the cricket and he considers cricket as a god. In sleep also he thinks about cricket. Kapil Dev has mentioned that when he was in my room, he was just playing cricket. He woke up and he was just playing. Then Kapil Dev realized he is sleeping. He just took him on the bed and he asked him to sleep. He never thrown his bat. Even there is something wrong happened, some mistake happened by him, if he get whatever clean bowled or LPW or whatever it may be, because he considered it as a god. Most important thing is that he has kept this cricket bat till now in his home as a god aspect for him. He has kept this beside his temple, the cricket bat, and he is doing devotion of this cricket bat on day-to-day basis. Whatever, flowers, whatever you want to, or even you do not want to, but he is just making the smaran of his bat. He is just learning, not learning, he is always thinking about that aspect, about that object. This is devotion. To be in that object 24/7, this is devotion. So you can do devotion in the same way, whatever you want to be. If you haven't made a thought, you can make this thought in 4 years, that what you want to be, where to be. Okay, and you can do devotion like that. Another, in the slide, we have seen effort. How much effort to do is the best example is Sachin Tendulkar. In one of the texts, Dasbodh, there is a proverb, Yatna Thakena Purta, means do optimum effort, do required effort. Sachin Tendulkar during one of the interview has mentioned he never practiced by finalizing the clock or deciding the timings, that I will practice for 2 hours, I will practice for 3 hours. No, he never seen clock. He never seen clock. He practiced till he feel that his mind felt that now this shot is perfect. Then he left his practice ground. And our text mentioned that do such kind of effort, optimum effort, required effort, till your mind is fulfilled. And whatever pains are happening during this time, work on that, overcome on that. Because today you are getting pain, but tomorrow there will be success, or there will be some result or outcome on the basis of that.
That's why he is God of cricket. Devotion doesn't mean chanting the name of God. The aspects, whatever we have seen, the elements what we have seen, they are not asking to chant my name. They are asking to live in my name. Act accordingly. That is more important. If you take the name of the Lord, but if you do the reverse activity, then it is of no use. But this also doesn't mean that you should keep everything away. Never chant the God name or never practice our culture or tradition, whatever your mother, father has mentioned. But with that, do effort also to practice that, to implement that in your day-to-day life. Do whatever God likes. Good habits, exercise, pranayam, yoga. These are the aspects which will take you near to IKS. Then University of Oxford has recognized one of our texts from IKS, which is a Dasbodh. I will show you slides, as one of the best text of management in the world. They have kept this in their library also, the English translation. Then all our Indian Institute of Management has recognized Lord Ram as oldest management guru. Then the ancient scriptures. So these are our Indian manuscript and spiritual texts, okay, which are included in our IKS. Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, these are written thousands of years ago, which is discussion in between different avatar of God, okay, and that has been worked by Rishi on verbal basis. There was no written as such. Means one Rishi told to another Rishi told to their Shishya, and like that it is there in front of us. Okay, rest the texts are also again part of the same. Which of the texts you know out of this? Know in the sense, or you might have seen in the form of serials on the television at least. Which are that names? Fantastic, yeah. So I request a team to play video number 2 now. पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमेट थे, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमेट। 10 बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट जो इंटरनेशनल रिलेशन, मैं हर कॉन्सेप्ट का आपको एक महाभारत में इक्विवेलेंट दे सकता हूं कि अगर आप कहें अरे आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उस समय भी अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा था, वो मल्टीपोलर भारत था जिसमें अलग अलग राज्य थे, सबको कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, 1-2 नॉन अलाइन निकले बीच, जैसे बलराम थे या रुक्मा थे। या अब हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज दुनिया है, इंटरडिपेंडेंस है, हम सब पे ये बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेंट ही थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं, पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार, उसके बाद आपको पता है उन्होंने क्या किया। या आजकल ये टर्म आया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर, हाँ, कि एक मर्यादा होती है देशों के बीच में, जो राजनीति में, कि आपस में कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। महाभारत की कहानी क्या है?
कि जो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, जैसे कर्ण या दुर्योधन, वो अपने आखिरी समय में खुद उनको अचानक रूल्स याद आ जाते कि वो कहते हैं भाई ये नहीं करो क्योंकि ये रूल के मुताबिक, और पूरी जिंदगी जो है उन्होंने उसी रूल्स का उन्होंने पालन नहीं किया था। आज हम कभी कभी आपस में हमारी डिबेट होती है कि हमारे खिलाफ हमसे बड़ा देश। अब ये याद रखिएगा कि पांडव जो है, पांडव कौरव की प्रोपोर्शन जो थी वो 7-11 थी, कि वो छोटी फौज थी, उनके पास छोटी फौज थी पर बड़ी सोच थी, अनुशासन ज्यादा था, क्रिएटिविटी ज्यादा था, इंटेलिजेंस ज्यादा था, और श्री कृष्ण उनके साथ थे। और हम कभी कभी रेपुटेशनल कॉस्ट की बात करते हैं कि रेपुटेशन जो है कूटनीति में, राजनीति में भी, जिस पे आप भरोसा, अब भरोसा की मैं क्या कीमत बताऊं आपको, जिस पे भरोसा करते हैं उसकी जो वैल्यू जो है, पार्टी हो, आदमी हो, देश हो, रेपुटेशन की बहुत कीमत होती है। और पांडवों की रेपुटेशन जो है कौरव से इतनी अच्छी थी, रेपुटेशन का बहुत फर्क पड़ा। और कभी कभी ये भी है कि जो बड़े गोल, जो लार्जर गुड के लिए कभी लोगों को माने टैक्टिकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये भी इसके बहुत उदाहरण, जो युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के बारे में कहा, अब स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, जो जब कृष्ण भगवान ने सूर्यास्त का एक किस्म से इल्यूजन क्रिएट किया तो जयद्रथ को लगा कि वो बच गए। हम जो हैं इतनी माने आसानी से ये शब्द लेते हैं, ट्रोजन हॉर्स, अखिलीज हील, गॉर्डियन नॉट। अब ये कहां से आते हैं ये शब्द? किसी और के कथा से आते हैं। अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं भी वही कथा पढ़ता हूं, मुझे भी उसमें रुचि है, पर मैं हमारे देशवासियों को समझाना चाहता हूं कि भाई आप अपने बारे में भी पढ़िए, इसका भी महत्व समझिए। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर दूसरों के अनुभवों और दूसरे के कथाओं से नहीं बनेगी। इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर इंडिया के एपिक से बनेगी। So the most important thing over here is our culture is with our own traditional, our system, that is IKS. And this world is accepting, world is recognizing. And how Dr. Narendra Modi ji has taken this to the world. Okay. So let's move further. So this is one of the texts which is the Dasboth philosophy, wherein I have done PhD on this text. This is referred, I will show the next slide. So here, this text is a kind of a combination wherein you to live your external life, your day-to-day life, as well as your internal life, or towards the mind and the body. Okay. So you have to earn your bread and butter also, and you have to follow the devotion also. Ramdas Swami himself was doing sun salutations, 1200 sun salutations day-to-day basis. Okay. He has formed 11 Hanuman temples at Maharashtra so that people should do Shaktichi Upasana. And he was Guru of Chhatrapati Shivaji Maharaj. He was given lot of warriors to Swaraj. Okay. So this is the difference. And the 4 key themes: devotions, which is already explained, you can do in the way you want. Service towards motherland, okay, you have to give something to my mother India. Then constant alertness, courage, wisdom, critical thinking, and critical effort, the way I explained the Sachin Tendulkar example. Okay, so this is best test of management, Dasboth, University of Oxford website, you can also check. Then now, what is IKS for engineers as well as for management students? Okay, now this Kautilya Arthashastra, it is included in your syllabus. Panini is the father grammarian. Acharya Nagarjuna is kind of a chemistry, engineering chemistry. Aryabhatta, motion solar system, okay, father of astronomy you can call, okay. Now these above 4 names is difficult for you, right?
You never heard about this, or you might have heard somewhere but not studied. So now you will study. So this is their IKS for engineers. Who are these two people below? Loudly please. Because you know this name because you are studying this in the schools. Okay, I do not have to tell what they invented, but I will ask you to read this line that views on science, philosophy and religion shows that Newton and Einstein have studied IKS. What Einstein has mentioned, religion and science go together. As I have said before, science without religion is lame and religion without science is blind. They are interdependent and have a common goal, the search for truth. That is ultimate truth, which I mentioned in the first slide in the spirituality. Aham Brahmasmi. I am that ultimate truth. This is what Newton has said. Newton has written a book, Religion, Science and Philosophy. It is available on Google free of cost. Download and read that. Even he has studied all our Sanskrit text, ancient text. It is something which happened 75 years earlier. Our Gurukul system was changed and then we followed what Britishers had done the syllabus. And unfortunately, the earlier ministers, earlier political who are in the power, they haven't made any changes. But now you will see. Now the history will be rewritten. The true history will come in front of you. And as India consists of most of the young population like you have to tell this to the world that before Einstein and Newton, we were having so many rishis who were more empowered than Newton. And in fact, they are accepting that. There is no wrong in Newton and Einstein. Respect them also, but respect our tradition also. IKS is not against Western philosophy. This is addition to Western philosophy. Okay? Addition to, I am saying. Contemporary to. Okay? So this is fine. There is Kautilya Arthashastra is there in your syllabus. But what are the key themes? Where exactly you can implement that? See, step wells, Indus Valley architecture, there is iron pillar at Delhi, mechanical and materials engineering, metallurgy, textiles, electrical energy system, water management, Ayurveda. Simple, Tulsi plant gives 24 hours oxygen. 24/7 it releases the oxygen. That's why our ancestors had mentioned, keep the Tulsi plant in front of door. Okay. So there is many more mathematics, computing like that. So these are the key themes for you. Then coming to the modern day Gurukul. Okay. I will just complete in next 2 minutes. Can you tell me which is the one of the modern day Gurukul still working in India? If somebody answers this question, he will get 100 out of 100 marks in IKS. Whatever the marks are there, I don't know, but he will get full marks. There is one Gurukul still existing, which consists of engineering, management students, even schools also, and functioning. Can you tell me the name of that institute? Somebody answering? Just in something like that? Somebody answering or somebody nothing? Yeah? Somebody answering from here? Sorry, I have to come near if you yeah? You are answering somebody answering? Nobody is answering? Huh? Nobody is answering. You are very near to this institute. Let me give you a hint. Huh? Now? Huh? Sorry? Very correct.
It's your institute. It's my institute where I did my engineering. It's none Sri Santa Gajanan Maharaj College of Engineering and Management Studies, Shegaon. Take this entire name in each and every interview, wherever you are going. And I have done this. Don't say SSGMCE. Say that I have done my Bachelor of Engineering in the year 2002 with 74% from Sri Santa Gajanan Maharaj College of Engineering, Shegaon. Say like this. Be proud of this. Take the entire name. Just don't say SSGMCE. That is fine. Website prospective or. But always remember Lord Gajanan Maharaj. Lord Gajanan Maharaj and Samartha Ramdas Swami both are same. Okay, there is a story also on that. I will not take that now. Okay, late Shiv Shankar Bhau Patil, Karma Yogi Shiv Shankar Bhau Patil, who has guided many of the corporates. Also, many of the CEOs and MDs he has guided through his work and mission. Many industrialists has came to him to resolve their problems of industry. Okay, and for me, my PhD or my idea of PhD was born over here only from in the 4 years. Before coming over here, Delhi I used to chant only Maruti Stotra. But when I come over here in the Swami Vivekananda, the first year hostel, there is the prayers. So Thote sir used to chant Hanuman Chalisa. I like that. And here I learn Hanuman Chalisa. So during these 4 years, after Maruti Stotra, I started chanting Hanuman Chalisa. I still revise it on daily basis. Today I chant that on daily basis. Pasaidan, that also I learn over here. That also I have done part over here. So I used to keep a small book of Hanuman Chalisa, Pasaidan in my locker. And daily I used to read that. Today I am just contemplating that wherever I am on daily basis. What I like is that in Hanuman Chalisa is that you be your guru. Lord Hanuman, you to be your guru. Kripa karu Gurudeva kinai. That I like. And that's why I'm over here to guide you, to take the time and on the IKS. So think about this seriously. Take this subject as the most important one, but study other subjects also. Have marks properly everywhere. Okay. So this is the kind of a mother of all subjects. You can say so. Then roots of technology and AI. We are talking about a lot about AI, but the roots of AI are nothing through Indian knowledge system only. Thousands of years earlier, we already used that. We were not having capacity until now to use that, but now we are starting. Then career in IKS. If somebody is interested in doing career in IKS, what is there? This is fine, but will I get money? Yes, you will get money. This is there. Teaching and research. If somebody from the management institute want to do PhD, can do PhD in IKS. Government, by 2030, the IKS will be increasing day by day. There will be IKS centers. Okay, so even you can join the government of India also. Industry application, engineering, technology, healthcare, we already seen. International opportunities, internationally also it is recognized. IKS is already recognized by many of the foreign universities. You can be a global educator, you can be a global consultant also. And you can earn, in fact, more money than any other career or any other industry in IKS. Take this from me. And this is never dying industry, because this is mother of all your other engineering subjects. So I will end
with a quote from Dasboth for engineers and all your students on ethical use of AI. Okay, so I request you can read this. It is there in English also. Can you read? There is no better machine than human body, and no better intelligence than harmony of mind, body, and spirit, which we have seen in the earlier, in the first slide. We talk about AI, we talk about technology, but this human body itself is a machine. It is working when you sleep also. It's no, there is, that's why this is the most important machine which is gifted by God to us, and it is up to us that you should nourish it properly externally and internally also. Okay, so with this I end my session over here. I had just taken 5 minutes, 6 minutes more. I am extremely sorry for that. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring session. We truly appreciate your time and efforts. Thank you so much, sir. Next session will start soon. Don't leave.
Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all dignitaries, faculty, and dear students. Today, we are privileged to have with us Mr. Ajay Butwani, sir, an experienced aptitude trainer who will be enlightening us on the topic importance of aptitude. This session will be surely guide you in shaping your academic journey and future career. I request everyone to welcome Mr. Ajay Butwani, sir, with a huge round of applause. Now I request Chetan Patil as a student representative to welcome and felicitate our guest Mr. Ajay Butwani sir. Thank you sir. Mr. Ajay Butwani sir has been training and mentoring students in aptitude, logical reasoning and problem solving, helping them prepare for placement and competitive exams. Without further delay, I invite him to take over the session. हेलो 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 ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, माय नेम इज अजय बुटवानी। बेसिकली आप लोगों की तरह मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 12-13 साल पहले झेल चुका हूँ, ठीक है। और आपकी अभी थोड़ी सी अभी क्या बोलना, ठीक है। आज के दिन जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड 4 सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इन चारों सवालों के जवाब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि भैया आप लोगों के लिए हु इज गोइंग टू टेक द एप्टीट्यूड, why aptitude is needed, what is there in aptitude and how our aptitude sessions will look like, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज के दिन में डिस्कशन करेंगे अपने ओरिएंटेशन सेशन में, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को आगे भी बताता हूँ कि हमारा जो एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए कवर किया जाएगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करें कि हु इज गोइंग टू कंडक्ट योर एप्टीट्यूड सेशंस, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। मेरा जो सबसे एक अच्छा फोटो था, हालांकि अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है। पर ठीक है, कोई वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं, ठीक है। आई एम सपोज टू टेक योर एप्टीट्यूड के सेशंस। अच्छा, अब अगर मैं एप्टीट्यूड के सेशन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो भैया मैंने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ा है कि मेरे को कॉलेज ने सिलेक्ट किया आपके सेशन लेने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर मैं मेरे बारे में थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊं, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों की तरह मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इन सीएससी ब्रांच, ठीक है। उसके बाद 2012 से 14 तक मैंने सीएससी में तो कभी भैया एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जॉब नहीं किया। मैंने जितना भी काम किया है वो 2012 से लेकर अब तक एप्टीट्यूड में ही किया, ठीक है। तो 2012 से 2014 पूना में, मेरे होम टाउन जलगांव में, उसके अलावा काफी सारी जगहों पर मैंने अलग अलग जगह पर जाकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एप्टीट्यूड के लिए सेशंस कंडक्ट किए, ठीक है। 2014 में अपने कॉलेज के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। उस वक्त अपने कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे मिस्टर विनय थोटे, अभी आदेश सोलंके सर हैं, लेकिन विनय थोटे सर जब थे 2014 में, मैंने आपके कॉलेज में पहली बार एप्टीट्यूड का सेशन लिए थे। तो लगभग 11-12 साल से आप लोगों के
सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैंने पिछले 11 साल से ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा 14 से 20 की अगर बात करें तो उस दरमियान मैंने एप्टीट्यूड में 2-3 बुक्स लिखी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और फिर क्वांट में एक थोड़ा सा वैदिक मैथ्स का भी एक बुक मैंने लिखा, ठीक है। और इस 6 साल के पीरियड में 2014 से 2020 में काफी सारी कंपनीज के लिए एप्टीट्यूड लेना, काफी सारे कॉलेजेस के लिए एप्टीट्यूड कंडक्ट करना, और इसके साथ इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कराना, ये सारी चीजें मैंने 2014 से 20 के बीच में की, अपने कॉलेज के लिए भी और इवन बाकी के बाहर के कॉलेजेस के लिए भी, ठीक है। फिर 2021 में, अब आपको सबको पता है कि 2020 देयर वाज अ कोविड ईयर, ठीक है। तो 2020 के बाद 21 में मुझे विनय थोड़े सर ने बोला कि सर अब ये इधर उधर घूमकर काम करना थोड़ा सा बंद कीजिए और एक काम कीजिए, अपने कॉलेज में आ जाइए, आप यहाँ पर एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर, एज एन कॉलेज के फैकल्टी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन उस वक्त एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि 2012 में मैंने एमई तो कंप्लीट किया नहीं था, सिर्फ बीई कंप्लीट किया था, और अगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, मतलब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी ज्वाइन करना है, तो उसके लिए एमई कंप्लीशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने ही कॉलेज में एमई मतलब अपने पोस्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई किया। पोस्ट ग्रेड का मैंने यहाँ पर एजुकेशन 21 में शुरू किया, और उसके साथ साथ अपने कॉलेज के लिए एप्टीट्यूड के सेशंस लेना भी शुरू किया। एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर मैंने अपने कॉलेज को ज्वाइन किया था। तो उस वक्त कॉलेज ने मुझे एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी अपने साथ कॉलेज में अपॉइंट किया था, ठीक है। और ये बोला था कि जैसे ही 2023 में अपना इंजीनियरिंग मतलब आपका एमई कंप्लीट हो जाएगा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी दरमियान 2021 से लेकर 23 तक जब मैं अपने कॉलेज में था, तो आपको पता होगा कि यहीं पर ही नजदीक में गोलखेड़ रोड पर एक और कॉलेज है, सरस्वती कॉलेज, ठीक है। वो बीबीए, बीसीए, एमसीए का कॉलेज है, ठीक है। तो वहां पर भी मुझे एप्टीट्यूड के सेशंस लेने के लिए बुलाया गया, और 2022 में उनका कहना था कि सर हमारा तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि अगर आपका एमई कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप हमारे कॉलेज में एज ए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ज्वाइन कर लीजिए और एप्टीट्यूड ट्रेनर के रूप में भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि पहले मैं उनके एप्टीट्यूड के सेशन 1 साल तक सिर्फ जिस तरीके से अपने कॉलेज के लिए ले रहा था, वैसे ही सरस्वती के लिए भी ले रहा था, ठीक है। तो बाद में उन्होंने मेरे को एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर एंड टीपीओ ज्वाइन किया, ठीक है। फिर वहां पर मैंने कुछ जॉब फेयर्स कंडक्ट किए, टीसीएस को वहां पर बीबीए बीसीए के बच्चों के लिए बुलाया, काफी सारी बड़ी कंपनीज के लिए वहां पर मैंने कैंपसेस अरेंज किए, अपने भी कुछ बच्चे वहां पर आए थे कैंपसेस के लिए, ठीक है। तो 23 तक वहां पर मैंने लगभग काम किया, और 23 में मेरा पोस्ट ग्रेड भी कंप्लीट हो गया अपने ही कॉलेज से, ठीक है। और इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी रैंक 1 अपने कॉलेज से SSGMCE का मेरा 23 का निकला, ठीक है। और फिर 23 में अपना कॉलेज के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि भैया पीछे भी मैं काफी सारे अलग अलग कॉलेजेस के साथ काम कर चुका था, तो उसमें एक CSMSS छत्रपति संभाजी नगर का कॉलेज था, वहां पर भी मुझे बुलाया गया था कि सर आप यहाँ पर आकर काम करने के लिए अगर इच्छुक हैं तो हम भी आपको इनविटेशन देते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ भैया, मुझे वहां पर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। तो 2023 की बात है, जब उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने सोचा था कि भैया सरस्वती कॉलेज में एज ए टीपीओ एंड एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर, और अपने कॉलेज के साथ भी एज एन एप्टीट्यूड ट्रेनर मैं ड्यूअल कनेक्टेड था। तो मैंने उनको बोला कि भैया ये दोनों कॉलेज में मैं कनेक्टेड हूँ, दोनों कॉलेज का मिला के इतना मिल रहा है, इससे ऊपर मुझे इतना चाहिए, इतना दे रहे होंगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ठीक है। मैंने ये सोचकर उनको ये चीज बोली कि सामने वाले मना कर देंगे। अब ये अलग बात हो गई कि सामने वालों ने हाँ कर दी, ठीक है। और अब क्योंकि सामने वालों ने हाँ कर दी, उसके बाद मैं उनको फिर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे मुझे बुला लिया था। तो इसीलिए फिर 2023 में आई लेफ्ट शेगांव and I went to Sambhaji Nagar, and I'm currently working with CSMSS Engineering College again as an aptitude trainer and as a training and placement team member, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया मेरे बारे में, ठीक है। अब कौन आपके एप्टीट्यूड के सेशंस कंडक्ट करने वाला है उसके बारे में तो डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल, हमें एप्टीट्यूड के सेशंस कंडक्ट करने की जरूरत ही क्यों है? ऑलरेडी हमारे पास 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स तो हैं, और हर सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट्स हैं, थियरी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल है, ओरल है, सारी चीजें हैं। तो उसके अलावा फिर एक अलग से एप्टीट्यूड करने की जरूरत क्या है हमें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू कंडक्ट एप्टीट्यूड, ठीक है। तो आप लोगों को बता देता हूं भैया कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, या फॉर दैट मैटर अगर कुछ बच्चे MBA के भी हैं,
तो इंजीनियरिंग या एमबीए कंप्लीट करने के बाद मान लीजिए अगर आपका एम है कि आपको किसी भी कंपनी में सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो उस कंपनी का फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी एप्टीट्यूड, ठीक है। कोई भी कंपनी, ठीक है, चाहे वो उसका पैकेज 3 लाख का है चाहे 30 लाख का है, ठीक है, उनका पहला राउंड जो होगा वो हमेशा एप्टीट्यूड टेस्ट का ही होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपको नहीं आती है तो चाहे आप यूनिवर्सिटी रैंकर क्यों ना हो, आप लोग सामने वालों तक आपका रेज्यूमे पहुंच ही नहीं पाएगा जब तक आपने पहला राउंड नहीं निकाला, ठीक है। तो इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट इज द फर्स्ट फिल्टर बिफोर द ऑफर लेटर, ठीक है। फॉर एनी आईटी और नॉन आईटी कंपनी द फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ना सर, हम लोग क्या करेंगे, हमको इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करने की इच्छा है, अगर एप्टीट्यूड के बिना जॉब नहीं मिल रहा तो हम एक काम करेंगे, आगे जाकर एमई एमटेक कर लेंगे। तो एमई एमटेक करने के बाद हम लोग जॉब पे चले जाएंगे, या फिर आगे जाकर हम, कुछ बच्चे जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम आगे जाकर एमबीए कर लेंगे, या कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या गवर्नमेंट सर्विसेज में चले जाएंगे, एमपीएससी, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग, रेलवेज, ठीक है। तो आपको बताता हूँ भैया, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी हो गया, चाहे एमई या एमटेक हो गया, चाहे आप लोगों का एमबीए हो गया, चाहे आप लोगों का कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, किसी भी प्रोसेस में भी आप लोगों का एप्टीट्यूड से पीछा छूटने वाला नहीं है। अब जैसे आप लोगों को शायद पता भी होगा, ये पिछले इन 8-10 दिनों में, 15 दिनों में जो भी आपके सेशंस हुए हैं, आप लोगों को शायद बताया गया होगा कि भैया जब आप लोगों को इंजीनियरिंग के बाद अगर एमई या एमटेक करना है तो उसके लिए एक एग्जाम देनी पड़ेगी, पता है कौन सी? गेट की एग्जाम, ठीक है। गेट की एग्जाम में भैया 75 to 80% आपका टेक्निकल आता है, माना मैंने, लेकिन भैया 20 से 25% का जो पोर्शन रहेगा वो एप्टीट्यूड का रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कुछ बच्चे ऑलरेडी एमबीए फर्स्ट ईयर के भी हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि भैया एमबीए के लिए भी जो एग्जाम होता है, अब जैसे कैट का एग्जाम हो गया या एमबीए सीईटी हो गया, उसमें भी फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड ही होता है, ठीक है। और अगर मैं ये स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग या रेलवे या किसी भी एग्जाम की बात करूं तो वहां पर भी आप लोगों का जो फर्स्ट राउंड होगा वो रिटन टेस्ट या एप्टीट्यूड का टेस्ट ही होगा। तो भैया आप लोगों को चाहे इंजीनियरिंग के बाद जॉब चाहिए, चाहे इंजीनियरिंग के बाद एमई करना है, चाहे इंजीनियरिंग के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब करना है, चाहे कुछ भी करना है, ठीक है, कम से कम एक बार एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं कम से कम एक बार बोल रहा हूँ, जैसे हो सकता है कि अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने 2007-8 की बात होगी, ठीक है, उस वक्त हमारी बैच इसी तरीके से इंडक्शन प्रोग्राम में बैठी थी, और उस इंडक्शन प्रोग्राम में हमारे प्रिंसिपल सर ने एक वाक्य बोला था कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो आपको यहाँ पर कम से कम 4 साल रहना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कम से कम 4 साल? ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप ईयर डाउन हो गए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है 5 साल, 6 साल, 7 साल भी आपको यहाँ पर रुकना पड़े। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि भैया एप्टीट्यूड में आप लोगों को कम से कम एक एप्टीट्यूड टेस्ट देनी है इंजीनियरिंग के बाद, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं। जब तक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं निकलेगा, इट डजंट मैटर कि आपका सीजीपीए 9 है, 9.5 है, आप यूनिवर्सिटी रैंकर हो, कुछ भी हो, कोई चीज मैटर नहीं करेगी, क्योंकि भैया सामने वाले कंपनी वाले के एचआर के पास आपका रेज्यूमे ही नहीं पहुंचेगा जब तक आप लोगों का एप्टीट्यूड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, दो तरीके हैं एप्टीट्यूड से बचने के, ठीक है। एस्केप प्लान भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। ये एस्केप प्लान दोनों के लिए है, बॉयज के लिए एक एस्केप प्लान है और गर्ल्स के लिए एक एस्केप प्लान है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स किस तरीके से एप्टीट्यूड से बच सकते हैं उसका तरीका बताता हूं। देखो, वहां पर बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन अगर पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको ओरली बता देता हूं कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे बॉयज हैं जिनके घर वालों के पास ऑलरेडी 15-20 करोड़ का जमीन है, तो आपके लिए एप्टीट्यूड की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर वो 15-20 करोड़ की जमीन बेचकर अगर 5% ब्याज पे भी रख दोगे साल के बैंक में, तो आप लोगों को 1 करोड़ साल का इंटरेस्ट ही आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर एप्टीट्यूड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली एक दूसरा ऑप्शन, वहां पर अगर पढ़ पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर 2029 में आपका अगर एजुकेशन कंप्लीट होता है, तो अगर कोई एनआरआई वेट कर रहा है कि इसका 29 में जाके इंजीनियरिंग कंप्लीट हो और मैं इसको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊं,
अगर ऐसा सिनारियो है तो एप्टीट्यूड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने भी 350, 400, 500 जितने भी बच्चे बैठे हैं, मेरे हिसाब से ये दोनों भी एस्केप प्लान किसी के लिए लागू हो रहे हैं क्या यहाँ पे? किसी के लिए भी नहीं ना? है क्या किसी के पास 15-20 करोड़ की जमीन? है क्या कोई एनआरआई वेट करने वाला? नहीं ना? तो भैया आप लोगों के लिए एस्केप प्लान नहीं है। एज सिंपल एज दैट, आप लोगों को झक मार के एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? नहीं पढ़ोगे तो भैया आप लोग इंजीनियरिंग के बाहर जब निकलोगे उस वक्त आपके हाथ में एक भी ऑफर नहीं होगा, ठीक है। भले आपका सीजीपीए कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भले आपकी कोडिंग प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, भले आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि बिना एप्टीट्यूड के आपको अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरे कॉलेज के कुछ बच्चे बताता हूँ, ठीक है। जो काम वो आईटीआई के स्टूडेंट्स एज एन इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर वैसे 10-12 हजार के जॉब कर लेते हैं, वहां पे एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं है। लेकिन प्योरली इंजीनियरिंग में अगर आपको जॉब चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, तब तो एप्टीट्यूड की जरूरत तो आप लोगों को भी पड़ेगी। और भैया आईटी वाले तो बिल्कुल ही भूल जाओ, कंप्यूटर, आईटी या फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जिनको आईटी में करियर करना है, वो तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि बिना एप्टीट्यूड के अपना कुछ भी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाला फिर भी इलेक्ट्रीशियन बन जाएगा 10-12 हजार पे, मैकेनिकल वाला मैकेनिक बन जाएगा, गाड़ियां ठीक करेगा 10-12 हजार पे, ठीक है। आपके पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है, कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है, डेटा एनालिस्ट बनना है, जावा डेवलपर बनना है, पाइथन डेवलपर बनना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में काम करना है। और ये काम करने के लिए कोई भी कंपनी पहला राउंड एप्टीट्यूड ही लेगी, ठीक है। तो भैया आप लोगों के पास कोई एस्केप नहीं है, जैसे कि अभी आप लोगों ने खुद ने होकर बताया, अपने को एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब मैंने आप लोगों के लिए क्लियर किया कि हमें एप्टीट्यूड की जरूरत क्यों है, ठीक है। कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं, ठीक है। क्यों पढ़ना है? कोई भी कंपनी पहला राउंड एप्टीट्यूड के बिना नहीं पार करेगी, ठीक है। और बचने का जो तरीका था उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि भैया एप्टीट्यूड के अंदर होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज देयर इन एप्टीट्यूड, ठीक है। तो इस व्हाट के ऊपर बात करते हैं कि एप्टीट्यूड में क्या अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज देयर इन एप्टीट्यूड का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो किसी भी कंपनी के एप्टीट्यूड की टेस्ट में आप लोगों को 5 चीजें देखने को मिल सकती है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, टेक्निकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कोडिंग या प्रोग्रामिंग का राउंड, ठीक है। अब ये कोडिंग या प्रोग्रामिंग का राउंड ऑब्वियसली उन लोगों के लिए वैलिड है जो आईटी में अपना करियर करना चाहते हैं। अगर आप आईटी से रिलेटेड नहीं हो तो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग आप लोगों के लिए शायद नहीं होगा, ठीक है। तो क्वांट, लॉजिकल, वर्बल, टेक्निकल और कोडिंग, ये 5 चीजें अगर आपको अच्छे से आती है तो आप लोग एप्टीट्यूड का कोई भी टेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, क्वांट, एलआर, वर्बल, टेक्निकल, कोडिंग, ये सब तो आपने बता दिया, इसके अंदर क्या होता है? क्वांट में क्या करना है, लॉजिकल में क्या करना है, वर्बल में क्या करना है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अच्छा, टेक्निकल और कोडिंग में क्या करना है? तो वो तो आपको 4 साल सिखाया जाएगा, ठीक है। टेक्निकल में आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है, आप लोगों के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंसेप्ट हो गए, आपका ऊप्स कंसेप्ट हो गया प्रोग्रामिंग में, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोग अभी जब आप लोगों का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग जब कंप्लीट होगा उस वक्त आप ये सारी चीजें सीखोगे। और फॉर दैट मैटर अगर जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से आप अपने अपने जो टेक्निकल नॉलेजेस हैं वो सारी की सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। और कोडिंग भी ऑब्वियसली आपका कॉलेज में कवर हो रहा है, ठीक है। मेरा फोकस क्वांट और लॉजिकल पे है, ठीक है। वर्बल के लिए भी अपने कॉलेज में अलग से फैकल्टीज हैं जो आप लोगों का वर्बल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो कवर करती हैं, ठीक है। और क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बोला, कॉलेज में सेशंस जो कंडक्ट करता हूं वो जनरली मैं कंडक्ट कर रहा हूं पिछले 11-12 सालों से, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ये जितनी भी चीजें आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से 5वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक के मैथ्स में ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी कवर की होगी, ठीक है। तो यही चीजें आप लोगों को अभी एप्टीट्यूड के अंदर भी सीखनी है फिर से। क्यों?
तो आप बोलोगे सर पहले सीखी थी अभी फिर से क्यों सीखे? तो उसके पीछे कारण ये है कि जब आपने पहले ये चीजें सीखी थी तब आपने ये सारी चीजें मैथमेटिक्स की एग्जाम पास करने के लिए सीखी थी, और उस वक्त आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते थे। ठीक है, एक स्टेप लिखा आधा मार्क, एक स्टेप लिखा आधा मार्क, ऐसे 5-6 स्टेप आपने लिखे तो 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, और अगर आपने एक आधा स्टेप लिखना भूल गए तो आधा मार्क कैंसिल। ठीक है, अभी आज की तारीख में सिनेरियो वैसा नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में जब हम यहाँ पर एप्टीट्यूड सीखेंगे तो आप लोगों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप मार्क्स नहीं मिलने वाले, आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने आपके सीईटी एग्जाम में देखे थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ठीक है, और वहां पर जैसे टाइम लिमिट थी उसी तरीके से यहां पर भी आपकी टाइम लिमिट होगी। ठीक है, और दिए हुए टाइम के अंदर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की भी बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग, अच्छा हाँ पीछे एक और बार मैं चला जाता हूं, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर्स दिए हैं ये एक तरीके से इन टॉपिक्स का वेटेज है। ठीक है, मतलब एक अजम्पशन कर लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस है तो 25 में से यू कैन एक्सपेक्ट परसेंटेजेस पे 2 आएंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे 3 आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे 1, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1, टाइम एंड वर्क पे 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये उन टॉपिक्स के वेटेज दिए हुए हैं मैंने, या फिर ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि 25 क्वेश्चन में से इतने इतने क्वेश्चन इस टॉपिक पे यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग में यू कैन सी देयर आर टॉपिक्स लाइक calendars, number series, coding decoding, letter series, clocks, blood relations, syllogism, ranking and ordering, cubes and dices, directions, sitting arrangement and data arrangement, data sufficiency, data interpretation and some miscellaneous part। ठीक है, ये इतना पार्ट अगेन अगर आपके सामने कोई 25 क्वेश्चन का पेपर है तो 25 क्वेश्चन में से यू कैन एक्सपेक्ट एक आधा क्वेश्चन कैलेंडर पे आ जाएगा, एक आधा नंबर सीरीज पे, 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग या लेटर सीरीज पे, क्लॉक्स पे एक आधा क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग 2 क्वेश्चन। इस तरीके से यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके पेपर में क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया जो मैं पार्ट आप लोगों के लिए कवर करूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब हालांकि ये पार्ट मेरा नहीं है बट स्टिल मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके रखा हुआ है वर्बल एबिलिटी का भी। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में आप लोगों को पैराजम्बल्स, वॉइसेस, वोकैबुलरी, स्पीचेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग द एरर, स्पेलिंग करेक्शन, क्लोज टेस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस और सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर कंपनीज में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे और उनके वेटेजेस भी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी अभी मैंने आपको दिखाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, इसके अलावा कोडिंग का पार्ट हो गया, यहाँ आपका टेक्निकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इन सबसे रिलेटेड मतलब इन सारी चीजों को मिक्स करके आप लोगों का कोई भी कंपनी का एप्टीट्यूड टेस्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर इन सारी चीजों को मिक्स करके एप्टीट्यूड टेस्ट बनता कैसे, उसका कोई एग्जांपल है? तो बिल्कुल एग्जांपल है। आप लोगों को पता है कि अपना कॉलेज 2025 में टीसीएस का प्रायोरिटी कॉलेज बन चुका है, बताया गया होगा आप लोगों को, है ना? अपना कॉलेज टीसीएस का प्रायोरिटी कॉलेज है। इसका मतलब ये कि टीसीएस वाले अगर हर साल 50,000 की हायरिंग करते हैं तो 50,000 की हायरिंग में वो सबसे पहले अपने कॉलेज से या अपने कॉलेज जैसे बाकी के प्रायोरिटी कॉलेज से 20, 25, 30,000 जितने भी उनको हायरिंग करने होंगे वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया से बचे हुए 20,000 पोस्ट या 25,000 पोस्ट की हायरिंग होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपने सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं टीसीएस जैसी कंपनी में या फॉर दैट मैटर बाकी की भी कंपनीज में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टीसीएस का इस साल अभी जो आपकी फाइनल ईयर की बैच पेपर फेस करने वाली है उसी का पैटर्न दिखा रहा हूं। ठीक है, ये अभी 25 की जो बैच है आपकी जो इस वक्त फाइनल ईयर में है वो इस तरीके का पैटर्न फेस करने वाली है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस का जो पैटर्न है उसमें क्या होने वाला है, तो टीसीएस के पैटर्न में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, एक फाउंडेशन सेक्शन और एक एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन चलेगा 75 मिनट और एडवांस सेक्शन चलेगा 115 मिनट। ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 25 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 25 मिनट और वर्बल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद जो एडवांस सेक्शन है, एडवांस सेक्शन के अंदर क्वांट और एलआर के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन 25 मिनट और फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन कोडिंग के जिसमें उनको मिलेंगे 90 मिनट। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर आपने फॉर्मेट बता दिया, अगर इसमें किसी को पास करना है
तो उसका क्या तरीका है? तो मैं आपको बताता हूं, टीसीएस आपको 3 तरीके के ऑफर्स देता है, निंजा, डिजिटल और प्राइम। ठीक है, निंजा में लगभग 3.5 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब लगभग 27-28 हजार रुपए महीना। ठीक है, डिजिटल में 7 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब लगभग 55-60 हजार रुपए महीना। ठीक है, और प्राइम में आपको 9 से 11 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब लगभग 75 से 90 हजार रुपए महीना। ठीक है, अगर आपको सिर्फ निंजा के लिए क्वालिफाई करना है, 3.5 का पैकेज अगर आपको चाहिए, निंजा के लिए क्वालिफाई करना है, आपने इन 20 में से 10-11 क्वेश्चन कर लिए, आधे क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यहां पर 20 में से 11 से 12 क्वेश्चन, एक 55-60% क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट। यहां पर 25 में से अगेन 13-14 क्वेश्चंस, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर आप एडवांस सेक्शन सॉल्व नहीं भी कर पाए, लेकिन यहां पर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आपको कम से कम निंजा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, डिजिटल के लिए आप लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 20 में से 12-13 क्वेश्चन, 20 में से 13-14 क्वेश्चन, और यहाँ पर 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन, और एडवांस के भी 15 में से 8 या 9 क्वेश्चन, और कोडिंग के 3 में से 1.5 या 2 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर 1.5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो भैया कोडिंग में कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, तो मान लीजिए अगर पहले क्वेश्चन के सारे टेस्ट केसेस आपने रन किए और दूसरे क्वेश्चन के आपने आधे टेस्ट केसेस रन किए, तो भी आप लोगों के पास चांस है कि आपको जो 7 LPA वाला इंटरव्यू है वो देने का मौका मिल जाए। ठीक है, और जो 11 LPA वाला इंटरव्यू है आपका प्राइम वाला, तो उसके लिए यहाँ पर आपको अराउंड 70% क्वेश्चन, मतलब 14 से 15 क्वेश्चन, लॉजिकल के 14 से 15 क्वेश्चन और वर्बल के 16-17 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप लोगों को 15 में से लगभग 10 क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पर आपके 2 कोड तो मिनिमम रन होने चाहिए, 2.5 रन होते हैं, 3 रन होते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात। फिर आप लोगों को कंपनी जो है वो 11 LPA के इंटरव्यू का मौका भी दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का टीसीएस का पैटर्न। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पीछे हमने ये जितनी भी चीजें देखी है, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, वर्बल और कोडिंग, ये सारी चीजों का मिक्सचर करके आपको ये पेपर देखने को मिला। ठीक है, अब कुछ कंपनीज में कोडिंग का राउंड नहीं होगा, लेकिन टेक्निकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, या कुछ क्वेश्चंस में कुछ कंपनीज में वर्बल नहीं होगा, सिर्फ क्वांट और एलआर होगा और उसके साथ टेक्निकल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, लेकिन मोर और लेस इन्हीं चारों पांचों चीजों को मिक्स करके आप लोगों का पैटर्न बनता है। ठीक है, इन्हीं चारों पांचों चीजों से रिलेटेड आप लोगों का पैटर्न जो है वो हो सकता है। जैसे कि मैंने इवन आप लोगों को टीसीएस का भी पैटर्न बताया, तो वो टीसीएस का पैटर्न भी इन्हीं तीनों चारों चीजों से रिलेटेड है जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम लोगों ने 3 सवालों के जवाब देख लिए कि हु इज गोइंग टू टेक योर एप्टीट्यूड, व्हाई डू वी नीड एप्टीट्यूड एंड व्हाट इज देयर इन एप्टीट्यूड। अब ये सारे सवाल तो हो गए। अब इसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि अगर आप लोग एप्टीट्यूड के सेशन कर रहे हो तो हाउ दिस एप्टीट्यूड का सेशंस विल लुक लाइक। ठीक है, हम लोग जो एप्टीट्यूड के सेशंस करेंगे वो किस तरीके के होंगे और उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो उसके लिए एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग अब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि भैया एप्टीट्यूड का सेशन आप जब मैं सेशंस कंडक्ट करूंगा तो वो किस तरीके से दिखाई देंगे, तो हाउ दिस एप्टीट्यूड का सेशंस इज गोइंग टू बी लुक लाइक। ठीक है, तो अब उसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा नंबर है 7,04,969। ठीक है, 704,969। ठीक है, इस नंबर के बारे में एक छोटी सी विशेषता बताता हूं कि ये नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये 1 से लेकर 100 में से किसी एक नंबर का क्यूब है। ठीक है, क्यूब पता है सभी को, एक ही नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको अपन क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको बिना कैलकुलेटर यूज किए 10, 15, 20 सेकंड में मुझे ये बताना है कि ये कौन से नंबर का क्यूब है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिना कैलकुलेटर का यूज किए 10-15 सेकंड में ये बता देना कि ये कौन से नंबर का क्यूब है, क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है अभी फिलहाल? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में जो एक मेथड सीखा हुआ है क्यूब रूट निकालने का, जो हमको हमारे 5वीं में गणित के मास्टर ने सिखाया था। ठीक है, वो कुछ ऐसा है कि अब जैसे 64 का क्यूब रूट निकालना है तो 64 को 2 से डिवाइड करो 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 2 1 आएगा। तो ऐसा आपका 2 × 2 × 2 × 2 6 बार है।
तो उसमें से जो नंबर 3 बार आया उसको एक बार लिखो, फिर जो 3 बार आया उसको एक बार लिखो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करो और फिर क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है, याद है ऐसा कुछ सीखा हुआ है बचपन में, है ना। अब उस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने गए तो फिर भैया 25 मिनट का अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अपने को टाइम मिल रहा है तो 20 क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, ये एक ही क्वेश्चन में अपना टाइम चला जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मेरे को बोलेंगे सर फिर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑप्शंस भी आएंगे। तो सर रादर देन हम लोग किसी नंबर का क्यूब रूट निकालें, जो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे हम उनका क्यूब करके देखेंगे कि कौन सा क्यूब 704969 के बराबर है। चलो मान लिया कि आप लोग ये प्रोसेस भी फॉलो करते हो। अब मुझे बताइए कि आपके सामने अगर मान लीजिए 4 ऑप्शंस है 83, 77, 49, ऐसे 4 ऑप्शंस है कुछ, ठीक है, और आप उनका क्यूब कर रहे हो। एक क्यूब करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक क्यूब करने के लिए जनरली कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 मिनट। एक नंबर को पहले 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर रिजल्ट को फिर से एक और बार उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 से 1.5 मिनट। पहले ऑप्शन में आपने 1 से 1.5 मिनट लगा दिया, मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं आया, फिर क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में 1 से 1.5 मिनट लगाया, वो भी सही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन में आपने 1 से 1.5 मिनट लगाया, वो भी सही नहीं है, फिर हाँ, तो फिर चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले पे इतना भरोसा करो कि अगर 3 गलत है तो चौथा सही होगा, फिर चौथा मार्क कर देंगे, चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल इस प्रोसेस में भी अपने 4.5-5 मिनट जा रहे हैं। क्या हम एक क्वेश्चन के लिए 4.5-5 मिनट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन के लिए 4.5-5 मिनट नहीं देना चाहते, हमको एक क्वेश्चन आइडियली 1 मिनट में अगर सॉल्व करना है, जो आप लोगों का लगभग शायद सीईटी का भी सिनेरियो था, ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी बताया था ना आपको आपके 12वीं के मास्टर ने कि 54 सेकंड में क्वेश्चन करना है, 54 सेकंड्स है ना। आज भी वही सिनेरियो ना, मैंने तो जब किया था तब ये था कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस। आज भी वही है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चंस का मतलब था 54 सेकंड में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की तारीख में आपने पीछे भी देखा कि भैया यहां पर भी आपको 20 क्वेश्चन 25 मिनट, 20 क्वेश्चन 25 मिनट, 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 15 क्वेश्चन 25 मिनट, मतलब लगभग आपको 1.25 मिनट ही मिल रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये टीसीएस के लिए, कुछ कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 1 ही मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर अपने पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 ही मिनट है, तो जो आपका ऑप्शन वाला मेथड है उससे भी काम नहीं हो रहा, तो फिर हम लोग क्या करें? तो भैया अब मैं आपको बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके लिए आपको क्यूब रूट निकालना है, उसके लिए आपको 1 मिनट तो नहीं, 5 मिनट तो बिल्कुल नहीं लगेंगे जो ऑप्शन वाली मेथड है। ठीक है, 1 मिनट भी बिल्कुल नहीं लगेगा जो कि आपका आइडियल सिनेरियो है। ठीक है, ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगेंगे हार्डली 5 सेकेंड। ठीक है, अब कुछ लोगों के चेहरे देखकर लग रहा है कि यू गाइस डोंट बिलीव मी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि जैसे कि बोला जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकंड में ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकल सकता है, तो अगर आप मुझे कोई क्यूब्स दोगे तो मैं भी उसका क्यूब रूट 5 सेकंड में निकाल देना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज हो पाती है तो मैं अपने जो बोल रहा हूं उसको प्रमाण कर पाऊंगा, अगर नहीं तो फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो अभी शुरुआत मत कर देना, पहले पूरा इंस्ट्रक्शन सुन लो फिर शुरुआत करना जो करना है। ठीक है, पहले सुन लो क्या करना है। ठीक है, ये शुरू नहीं करना है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होता है, या आपके पास कुछ लोगों के पास अगर कैलकुलेटर होगा साइंटिफिक वाला या कोई भी कैलकुलेटर, अभी नहीं तुरंत नहीं, हम लोग कैलकुलेटर निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे हम लोग 1 से लेकर 100 तक किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे। ठीक है, और उस क्यूब की वैल्यू आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकंड में आंसर आ सकता है, तो शायद 5 सेकंड में मैंने खड़े खड़े गेस कर देना चाहिए कि आपने जो नंबर लिया था उसका क्यूब रूट क्या है। ठीक है, लेकिन अब कुछ पहले से इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं, क्योंकि ये चीजें बीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग थोड़ा सा जल्दी से क्लिक अगर नहीं हो रही है, तो मैं पहले से कुछ इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर देता हूं। आप लोगों ने लेटेस्ट से अपने कैलसी पे लिया 83 और आपने कैलसी पे किया 83 into 83 into 83। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5718787। ठीक है, तो आपको मुझे 83 नहीं बताना है, आपको मुझे 571787 बताना है। ठीक है, 83 मैं आपको बताऊंगा, वरना काफी सारे बच्चे क्या करते हैं 83 का क्यूब करते हैं, वैल्यू निकालते हैं और फिर मुझे बोलते हैं सर 83 का आंसर बताओ। अरे भैया 83 ही आंसर है, आपको मुझे देना था ये वाला नंबर। ठीक है, ये पहला इंस्ट्रक्शन क्लियर है सभी के लिए। हाँ, दूसरा इंस्ट्रक्शन,
नंबर कहां से कहां तक लेने? हाँ, तो भैया आपको मैं बता देता हूं 1 से लेकर 100 के बीच में 547 नहीं आता है। ठीक है, 547 मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कुछ लोगों ने ऐसे बहुत सारा बड़ा सा नंबर दे दिया, हालांकि मैंने उनका भी आंसर उनको बता दिया ये 547 है, लेकिन मैंने एक पहले से इंस्ट्रक्शन देकर रखा है कि नंबर कहां से कहां तक लेना है, 1 to 100 लेना है। ठीक है, फिर एक कुछ तो भी वहां पर अचानक से एक और दूसरा बच्चा निकला, बोले सर बोल रहे हैं ना 1 से 100, लो सर 37.23। अरे भैया नेचुरल नंबर मतलब किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 100 को। तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सभी के लिए? 1 से 100 तक नेचुरल नंबर, अभी निकाल लीजिए कैलसी। ठीक है, 1 से 100 तक कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए कैलसी पे, और मेरे साथ ऐसा क्या बोलते हैं उसको, नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है सर। 7 11 15 ऐसे नंबर्स मत लीजिए, 1 से 100 जो लेना है लीजिए। ठीक है, क्यूब कीजिए, क्यूब की वैल्यू मुझे बताइए एंड आई विल ट्राई टू गेस कि आपने कौन सा नंबर लिया है विद इन 5 सेकेंड्स। यस, एनीवन। मैं सामने चला जाता हूं ताकि किसी के आंसर्स मेरे को दिखाई ना दे। हाँ जी प्लीज। 238 328। Okay, let me guess the number which I've taken is 62. Is that 62? Thank you so much. हाँ जी प्लीज। 9126। Okay, let me guess the number which I've taken is 97. Is that 97? Thank you so much. हाँ, अरे भैया इसके बाद भी 2 बार के बाद भी नंबर दे रहे हो, मतलब विश्वास नाम की चीज नहीं रही यार दुनिया में। अच्छा बोलो भैया, बोलो। हाँ कौन बोल रहा है, बोलो। 195112। अगर यहीं पे खड़े खड़े 58 बता दिया आपको विश्वास आ जाएगा? 58। हाँ ठीक है भैया, चलो 58। अच्छा आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे कितना टाइम लग रहा है? शायद जो मैंने कमिटमेंट किया था कि आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा, 5 सेकंड में आंसर आ रहा है। अच्छा बाय द वे यहां पर ना कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, बीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसी चीजें काफी सारे लोगों के मन में भी आती हैं कि सर ने थोड़ी देर पहले अपनी करियर टाइमलाइन में दिखाया था कि 2012 में इनका हुआ था इंजीनियरिंग, और 2012 से सर काम कर रहे हैं एप्टीट्यूड की फील्ड में, तो 13 साल तो हो गए सर को इस फील्ड में। तो हो सकता है कि सर ने 13 साल में 1 से लेकर 100 तक सारे क्यूब याद ही कर लिए हैं, और यहां पर आकर हमारे सामने ये दिखा रहे हैं कि ये एक नंबर इस तरीके से और ये उस तरीके से। ठीक है, तो भैया चलो मान लिया। ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, मान लिया कि मैंने 1 से लेकर 100 तक सारे क्यूब शायद याद कर लिए हो 13 साल में। ठीक है, लेकिन क्या 13 मिनट में, अपने पास 13 मिनट का ही समय बाकी है, ठीक है, क्या 13 मिनट में आपको 1 से लेकर 100 तक सारे क्यूब याद हो जाएंगे क्या? नहीं, लेकिन 13 मिनट में हम लोग ऐसा कुछ जरूर देख लेंगे कि आपको क्यूब याद ना रखने पड़े और फिर भी आंसर्स आ जाए। ठीक है, देखना है अगले 13 मिनट में कैसे कर सकते हैं हम ये चीज। हाँ, तो चलो भैया सबका ध्यान स्क्रीन पर, ये चीज कैसे की जा सकती है सबके सब देख लीजिए। मैं आप लोगों को ये जो कर रहा हूं वो करके दिखाता हूं, एग्जांपल देके दिखाता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने एक सवाल है, अब सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहिए, समझते रहिए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे सबसे पहले स्लाइड पर पूछा था ना, उसका आंसर आप लोग मुझे दोगे 5 सेकंड के अंदर। अभी कैलसी पे उसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आप बिना कैलसी के उसका आंसर 5 सेकंड में मुझे दोगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने एक सवाल है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 185193। मान लीजिए आप में से किसी ने मुझे ऐसा नंबर दिया रहता, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखता, और मेरे सिर्फ 1 से लेकर 10 तक के ही क्यूब याद हैं, इसके अलावा मुझे कोई क्यूब याद नहीं है। ठीक है, और 1 से 10 के क्यूब इज मोर देन सफिशिएंट मेरे किसी भी सवाल का जवाब निकालने के लिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो मेरे सामने 1 से 10 के क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 5 812, 9 729 और 10 1000। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, और इसीलिए मैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट 5 सेकंड में निकाल सकता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा प्रोसेस कुछ ऐसा है कि अगर मेरे सामने कोई नंबर आ जाए जिसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, तो मैं इस नंबर को 2 से 3 से किसी नंबर से डिवाइड नहीं करता, मैं इस नंबर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपके हिसाब से इधर लेफ्ट हैंड साइड होगी और इधर राइट हैंड साइड होगी, तो आपको डिवाइड करते वक्त, अपने नंबर को तोड़ते वक्त सिर्फ ये ध्यान में रखना है
कि आपके नंबर के राइट हैंड साइड में हमेशा 3 डिजिट होंगे। हम क्या निकाल रहे हैं किसी नंबर का? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट के लिए उसी तरीके से ध्यान में रखिए कि राइट हैंड साइड में 3 डिजिट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमेशा 3 डिजिट होंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ। अच्छा, तो मैंने मेरे नंबर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 185 और 193। ठीक है, अब जरा लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 185, और मुझे 1 से 10 के क्यूब्स देखकर बताइए कि 185 कौन से दो क्यूब्स के बीच में आता है? 5 and 6। 5 और 6 में से छोटा नंबर 5। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए आंसर आ गया 5। खत्म। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के लिए एक और डिजिट निकालना है मुझे। तो 193 का मैंने लास्ट डिजिट देखा यूनिट प्लेस पे, क्या आ रहा है? 3। तो भैया ऐसा कौन सा क्यूब है जिसका यूनिट्स प्लेस 3 आ रहा है? 7। तो राइट हैंड साइड के लिए मैंने डिजिट लिख दिया 7। दैट्स इट, गेम ओवर, माय आंसर इज 57। कैलसी पे करके देख लो 57 का क्यूब कितना आता है। आ रहा है? आ रहा है 185,193। चलो ठीक है भैया, एक बार हो गया, और हो सकता है कि पहली बार में कुछ लोगों को समझा भी नहीं और उतनी देर में काम भी हो गया। एक और करते हैं, एक और करते हैं, सबका ध्यान स्क्रीन पर, एक और बार करते हैं। ठीक है, मेरे सामने एक नंबर है 262144। मैंने इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 262 एक तरफ, 144 दूसरी तरफ। 262 कौन से दो के बीच में? 6 and 7। 6 और 7 में से छोटा नंबर 6। मेरे आंसर का पहला डिजिट होगा 6, आखिरी में 4, आखिरी में 4, मेरा आंसर आ गया 64। दैट्स इट, गेम ओवर। एक और करते हैं, एक और करते हैं, सबका ध्यान स्क्रीन पर। मेरे सामने एक नंबर है 12167। मेरे सामने एक नंबर है 12167। मुझे यह ध्यान में रखना है कि राइट हैंड साइड में 3 डिजिट होने चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही रहेंगे। अब गलती यहां पर बच्चे ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे 121 और राइट हैंड साइड में लिख देंगे 67। ये गलती है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 कितने भी डिजिट चलेंगे, राइट हैंड साइड में हमेशा 3 होने चाहिए। तो यहां पर मैंने देखा 12, कौन से दो के बीच में? 2 and 3। 2 और 3 में से छोटा नंबर 2, और आखिरी में 7, आखिरी में 7, 3। दैट्स इट, गेम ओवर, माय आंसर इज 23। बस इतना ही करना था, और जब आप लोगों ने मुझे नंबर दिए मैंने भी मेंटली बस यही किया था। ठीक है, तो मैंने शायद आपको बोला था कि 13 मिनट के अंदर हम लोग कुछ ऐसा सीख लेंगे कि अब इसके बाद आप लोगों को क्यूब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल आंसर आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर सीख तो लिया, लेकिन थोड़ा सा कुछ दीजिए, हम भी कर सके ये नंबर, कोशिश कर सके। तो ठीक है भैया, ये लीजिए, आपके सामने 6 क्वेश्चंस हैं, 6 क्यूब्स, और उसमें से एक नंबर ये वाला भी है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था। 6 के 6 सॉल्व कीजिए, अगर आपके पास पेन एंड पेपर होंगे तो। देखिए आपको कितना समय लगता है मुझे सारे के सारे आंसर्स बताने में। सारे निकाल लीजिए, सारे निकाल लीजिए, फिर एक साथ सारे आंसर्स देखेंगे हम लोग। आपके सामने स्क्रीन पर 6 के 6 आंसर्स हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे तो आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूं, मैंने मुश्किल से आपको 2 या 3 मिनट दिए थे, और 2 या 3 मिनट में अगर अपन 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन अपना 20 सेकंड के आसपास सॉल्व हो रहा है। तो शायद मैंने आपको यही बोला था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम 15-20 मिनट, 15-20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, और वो चीज शायद आज अपन अभी कर ही पा रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ही एग्जाम्पल है, चेक कर लीजिए, यही आंसर्स आए हैं सभी के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी मेरे पास वैसे 3-4 मिनट और हैं, तो डिस्कशन के लिए भी लास्ट में थोड़ा सा टाइम रखेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा टाइम और है तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन जो स्क्रीन पर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा चीज और यहां पर करेंगे। ठीक है, वो चीज करके फिर आप लोगों के साथ जो मेरा आज का सेशन है उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी चीज करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि भैया अपने को एप्टीट्यूड अलग से सीखने की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो आपके who will take the aptitude, why do we need aptitude, what is there in aptitude and how the aptitude sessions will look like, ये सारे सवालों के जवाब तो आप लोगों को होप सो मिल चुके होंगे। ठीक है, अब इसमें how we will conduct the sessions। ठीक है, अपने सेशंस एप्टीट्यूड के कैसे होंगे उसके लिए आपको कुछ अलग से करना है क्या? कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2023 में मैंने शेगांव छोड़ा था, लेकिन SSGMCE के साथ मेरा जो 2014 से कांटेक्ट है वो अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए मैं यहां पर हूं। ठीक है, और इसीलिए इवन आप लोगों के जो सीनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उनके सेशंस अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, उनके सेशंस कैसे चलते हैं? तो अपने कॉलेज टाइमिंग से या तो पहले या तो कॉलेज टाइमिंग के बाद। ठीक है, आप लोगों के ऑनलाइन सेशंस होते हैं रोज के रोज लाइव सेशंस। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जो मैं कंडक्ट करता हूं। ठीक है, कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के लिए वो सेशंस वैसे भी कंपलसरी ही है, तो आप लोगों को वैसे भी ये सेशन अटेंड करने ही है। ठीक है, जो सेकेंड ईयर से शुरू होंगे आपके लिए, फर्स्ट ईयर से नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोगों के एप्टीट्यूड के सेशन शुरू होंगे। ठीक है, जहां पर सेकेंड ईयर में सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूनिट 1, थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूनिट 2, और थर्ड ईयर के सेकेंड सेम में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यूनिट 3। ठीक है, और फिर फाइनल ईयर में आप लोगों का 3 से 4 हफ्ते का एक क्रैश कोर्स के जैसा होगा। उस क्रैश कोर्स में हम लोग सारा का सारा जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सीखा उसका क्विक रिवीजन करेंगे, और इसके बीच में आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी होते रहेंगे एप्टीट्यूड के। और साथ ही साथ मैं कॉलेज में मान के चलिए कि सेमेस्टर में 2 बार और साल में 4 या 5 बार आऊंगा। ठीक है, और अपना जो भी एक एप्टीट्यूड का पार्ट, मान लीजिए जैसे पीछे लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स थे, स्क्रीन एक मिनट चालू कर दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। हाँ, ये जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं या जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, इनमें से मान लीजिए जैसे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए या 8 टॉपिक या 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो आई विल बी देयर इन द कैंपस। ठीक है, और मैं आप लोगों का जो ऑडिटोरियम है वहां पर फिर से आप सभी को कनेक्ट करके, ठीक है, जितना भी टॉपिक हो चुका होगा उसका हम क्विक रिवीजन ऑफलाइन भी करेंगे। मतलब अपना जो एप्टीट्यूड का सेशन चलेगा वो एक हाइब्रिड मॉडल में चलेगा, जिस तरीके से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, एंड इन केस 26 में एक्सपेक्टेड है कि मेरा पीएचडी शायद अगर कंप्लीट पूरा हो जाता है, हो सकता है उसको 5-6 महीने आगे पीछे कभी कभी पीएचडी को हो सकते हैं, तो अगर 26 में पीएचडी कंप्लीट हो जाता है, इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो सोमानी सर ने भी मुझे बोला है कि सर अब आप वापस शेगांव आ जाइए। ठीक है, तो शायद पॉसिबल है कि अगले साल जब आप लोग सेकेंड ईयर में जा रहे होंगे तो मे बी आप लोगों के सेशन ऑनलाइन की जगह मैं आप लोगों के क्लासरूम में ही कंडक्ट कर रहा हूँ, शायद पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं, इफ एवरीथिंग गोज वेल तो शायद आपके सेशंस क्लास में हो रहे होंगे, और अगर नहीं तो फिर भैया जो अभी तक आपके बैचेस के साथ चल रहा है उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिला है कि 5-6 टॉपिक ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन में आपने धीरे धीरे करके टॉपिक सीखे, फिर एक दिन में आया, एक दिन में मैंने सारे टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन किया, उसके ऊपर एक टेस्ट हुआ, एक पार्ट खत्म, अगले पार्ट पर गए। इस तरीके से भी ये चीज चल सकती है, नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आकर भी शायद अपने कॉलेज के साथ ज्वाइन कर भी आपके सेशंस कंडक्ट कर सकता हूं। सो अब ये देखते हैं कि सेकेंड ईयर में कैसे होता है, लेकिन अब क्योंकि अपने पास थोड़ा सा टाइम है तो इस पार्ट के बाद, ठीक है, ये इतना तो देख लिया हमने, एक छोटी सी चीज और करेंगे और फिर उसके बाद सेशन क्लोज करता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाइएगा। यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि
आपकी बर्थ डेट क्या है और आप कौन से दिन पे बॉर्न हुए थे? हाँ, आर देयर एनी स्टूडेंट्स? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओके, देयर आर मेनी. ओके, मैम प्लीज आपकी बर्थ डेट बताएंगे मुझे? वार नहीं बताना है, मैं गेस करने का कोशिश करूंगा कि आप कौन से दिन पे बॉर्न हो. हाँ, 4/11/2005. ओके, इन्होंने मुझे एक डेट दी है 4/11/2005. तो 2005 को देखकर मुझे 5 ही दिखाई देता है. 11th मंथ मतलब ये 8 हो जाता है और 4 तारीख मतलब ये 12 हो जाता है और 12 के हिसाब से मैम आप फ्राइडे बॉर्न हो. इज दैट फ्राइडे? ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, अब ये क्या किया मैंने अभी अभी, ठीक है? तो ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा अगर पीछे मैं जाऊंगा तो सेकेंड ईयर में अपना जो पहला ही टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, कैलेंडर्स, उसका एक छोटा सा डेमो दिया. अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, तो इसमें अपने को एक तारीख दी हुई थी और उस तारीख से मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए. अच्छा, ये कैलकुलेशंस मैं मेंटली कर सकता था जैसे पीछे क्यूब रूट के लिए किए थे, लेकिन आपके सामने मैंने 2-3 कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाए जस्ट टू शो यू कि भैया किसी भी तारीख से वार भी निकालना इज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स. 2-3 कैलकुलेशंस होते हैं और हमारा आंसर आ जाता है. ईयर के ऊपर, मंथ के ऊपर और डेट के ऊपर 2-3 कैलकुलेशंस और हमारा आंसर हमारे सामने आ सकता है. एंड नॉट जस्ट फॉर कैलेंडर्स, ये जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये जितना भी लॉजिकल रीजनिंग है, इन सारी चीजों के लिए आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि भैया अपने जब सेशंस हो जाएंगे आप लोगों के आंसर्स इतने ही जल्दी निकलेंगे, ठीक है, जितनी जल्दी आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा क्यूब रूट के जरिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए होने वाली है फॉर श्योर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो विद दैट हमारा हु, व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ये सारी चीजें कंप्लीट हुई. मुझे जो आप लोगों के लिए डिस्कशंस करने थे वो भी पूरे हो गए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड now if there are any questions I'm ready to take your questions or else if you want we can move. ठीक है, मतलब एटलीस्ट मेरा सेशन फिर मैं क्लोज कर सकता हूं. इफ देर आर एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी. एनीवन? इफ देर आर एनी वॉलंटियर्स आर देयर, आप माइक लेकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यस, एनीवन? सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम पार्थ बोदड़ फ्रॉम सीएससी ब्रांच. सर जैसे आपने क्यूब रूट का क्वेश्चन पूछा था. हाँ सर अगर मान के चले कि क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3^25, हाँ, तो वो कैसे निकालेंगे? अच्छा, आपका सवाल है कि 3^25 इसका अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहली चीज, अगर 3^25 का सवाल पूछा जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपसे उसका पूरा वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. आपसे उसका हो सकता है कि यूनिट्स प्लेस पे क्या आता है या लास्ट 2 प्लेसेस पे क्या आता है, इस तरीके के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे. तो फॉर श्योर ये अपना एक नंबर सिस्टम का टॉपिक आता है, उसके अंदर का एक पार्ट है. ये सारी चीजें फॉर श्योर कवर होगी. अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं पे देखा है कि 3:25 का अगर सॉल्व करेंगे तो उसका लास्ट प्लेस क्या आएगा, तो उसके लिए अगर आपको अभी इस वक्त आंसर चाहिए तो 3:25 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो उसका लास्ट प्लेस 3 आएगा. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कैलसी पे. कैलसी की शायद इतनी औकात नहीं होगी कि वो 3:25 का पूरा आंसर दिखा दे, वो आपको 10 समथिंग में आंसर दिखाएगा. लेकिन अगर उसका एक्चुअल आंसर आप निकालोगे, अगर कहीं पे पॉसिबल है, तो लास्ट प्लेस पे 3 आएगा. सेकंड लास्ट प्लेस भी क्या आएगा वो भी अगर पूछा होगा तो वो भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं. इन सारी चीजों की ट्रिक्स है. ठीक है, ओके, यस, एनीथिंग एल्स? ओके, सो विद दैट आई थिंक हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है. आई थैंक यू सो मच एवरीवन. आप लोगों ने पेशेंटली सेशन अच्छे से अटेंड किया है. एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक सोमानी सर, आदित्य सोलंके सर एंड द होल टीम ऑफ SSGMCE जिन्होंने मुझे ये सेशन लेने के लिए चांस दिया और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए चांस दिया. ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन. फर्स्ट ईयर पास कीजिए, फिर सेकेंड ईयर में आप लोगों से हो सका तो ऑनलाइन और अगर नहीं तो फिर ऑफलाइन ही मुलाकात करते हैं. ठीक है, थैंक यू.
Thank you so much, sir, for your thank you so much, sir, for sharing your knowledge with us. Your session on the importance of aptitude was very helpful and motivating. We are grateful for your time and support. Once again, thank you so much. There will be 15 minutes break.
Good afternoon, everyone. A warm welcome to all our respected guests, faculty members, and dear students. Today, we are honored to have with us Dr. A.B. Marathe Sir, member of Advisory Council of Sant Gadgil Amravati University. He will guide us on a very important topic, National Education Policy 2020. Let us now welcome him on the stage with a big round of applause. Now I request Dr. S.B. Somani Sir, Principal of SSGMCE, to kindly welcome and felicitate our esteemed speaker. Thank you, sir. Dr. A.B. Marathe Sir is a distinguished scholar and mentor known for his valuable contribution in higher education policy and its development. As a member of Advisory Council, he has played an important role in guiding academics reforms. His knowledge and experience will help us understand NEP 2020 more clearly. Now I invite Dr. A.B. Marathe Sir to address us. थँक्यू बेटा. ॲट द आउटसेट आपण सगळेजण संत गजानन महाराजांच्या चरणी लीन होऊया. हो. Am I audible? Yeah, okay. तर सर्वप्रथम आपण संत गजानन महाराजांच्या चरणी लीन होऊया. Friends, we may have our different set of, you can say, upbringing, yes, our views about, say, religion, anything. But one thing is very sure. Everybody and anybody respects the spirituality because it gives us some concentration. You may be knowing that Stephen Hawking, who was a great scientist, not believer of God, etc. But if you read his book, Theory of Everything, read the last chapter. Complete book, he says that, okay, there is nothing like God, etc. But he explains complete science, atom structure, energies. And in the last chapter, he says, I do agree that I may not be believer, but finally, one question comes to mind. Who is the architect of everything? Atomic structure मध्ये इलेक्ट्रॉनच्या जागी ऑर्बिट मध्ये फिरताना नसते. इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह, प्रोटॉन पॉझिटिव्ह ते एकत्र येऊ शकले नसते, किंवा त्यांच्या पोझिशन किंवा एनर्जीज थोड्या जरी इकडे तिकडे असत्या तर there would not have been anything what we call it as matter, no existence. So finally he says, I am not a believer, but ultimately I say that there has to be somebody who runs everything around. So that divinity, that feeling that I am nobody, whatever we do, it's not really that we do, it is get done through somebody, some divinity, and there we have to ultimately say. So irrespective of what you can say, our faith is there, our religion is there, ultimately final conclusion is whomsoever you may believe or not believe, but go ultimately to that divinity, because that gives us the strength, power, energy to do the things on our own. So that is the reason in the beginning, even though we are in engineering college, we are all disciples of science, ultimately somewhere at the end we are bowing it to down.
Again, let us pay our rich tribute to Vairagya Murti, Santa Gadge Baba, under whose name our university, you can say, is there. So, with our dedications, with our tributes, let us give thanks to management and principal of such a wonderful institution, Santa Gajanan Maharaj College of Engineering, and you can say its management, principal, all your faculty members, because their efforts, untiring efforts, their vision brings you all here, and that also helped me to come and interact with you. Sir, I am really thankful to you and your management. Friends, let us think that why we are here. Probably all of us, after either doing 12th or those who are in MBA after graduation, we have taken certain decision, and that decision is regarding building our own career. So I congratulate you all for two things. Number one, taking decision, and second thing, taking right decision. So honorable principal sir, faculty members, and my dear student, let me begin why I congratulate you. आपलं औपचारिक शिक्षण कदाचित वयाचे जेव्हा आपण 2.5-3 वर्षाचे होतो तेव्हापासून सुरू झालं. याला आपण नर्सरी एज्युकेशन, प्री प्रायमरी एज्युकेशन, काही जण गेले असतील नसतील, पण डेफिनेटली आपण फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीम मध्ये अगदी आपल्या वयाच्या लहानपणी 3, 4, 5 वर्षापासून आपण त्याच्याशी जोडले गेलो. आता तुमच्यापैकी किती जणांनी त्या वेळेला जेव्हा तुम्ही प्रायमरी किंवा प्री प्रायमरी मध्ये गेलात, किती जणांनी, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव टेकन डिसिजन to join school or to go into a particular school? Probably none of us. That time our best institution, what we call as parental institution, they take decision and they have put you in certain school. तुम्हाला तुमच्या पॅरेंटनी शाळेत दाखल केल्यानंतर एक सुटकेचा निश्वास सोडून असं म्हटलं असेल, आज आम्ही मुलाला, माझ्या मुलीला शाळेत टाकलं. या पूर्ण जगामध्ये 2च ठिकाणी टाकल्या जातं, बाकी ठिकाणी आपण जातो. कुठल्या आहेत ती 2 ठिकाणं जिथे टाकल्या जातं? एक आहे जेल, पोलीस म्हणतात आम्ही याला जेलात टाकलं, आणि दुसरी आहे फॉर्मल एज्युकेशन सिस्टीम, ज्याला पॅरेंट्स म्हणतात आम्ही मुलांना शाळेत टाकलं. सो दॅट टाइम इन बोथ द प्लेसेस नायदर वी आर रिअली इंटरेस्टेड टू गो, रडतात शाळेत जाताना, नॉर वी आर हॅपी, पण देअर इज समबडी, सम सिस्टीम्स जे आपल्याला उचलून टाकतात. सो दॅट टाइम वी डिडंट टेक एनी डिसिजन. से probably from 10th onwards you have started taking your own decisions, but there also role of parent was very important. कि science घे, commerce घे, arts घे. So you have taken a right decision to pursue science, those who have come to engineering, and probably arts, commerce or science, those who are coming to MBA. But you have started taking decision that time, and then the institution of parents starts telling you की बा कुठे ट्युशन लावायचं आहे, लाव, तुला जे पाहिजे ते आम्ही करतो, आम्हाला काही नको, तू आपली चांगलं शिक आणि पायावर उभी राहा. दॅट इज द ओनली एक्सपेक्टेशन द institution of parents keep from you. Then you have done with good score your 12th, some competitive examination. Those who are in MBA, they have also appeared for some competitive examination like CET, and then you have taken decision. There parents will say तुला काय शिकायचं आहे ते शिक, तुला कुठे ऍडमिशन घ्यायची आहे ती घे. And now I congratulate you because you have taken a very right decision. After 12th you have taken decision to pursue the course of program of engineering so that you can build your life. And those who have come to MBA, they have also taken a right decision to pursue professional course like business administration, because again you want to have a good career and good quality of life in future. I know this institution, I know your faculty, I know your principal for many years. So with that association with such a great institution and great people, take it from me
that you are in the best secured hands. So your and your parent decision to take engineering or MBA, and that too in this college, is right. So you deserve special congratulations. Now friends, your decision you have taken, what for? Ultimately, you have not taken decision to be here for 1 year or 2 years, 3 years or 4 years. You have taken decision to leave this institution. You are not a permanent resident of this college. But during the stay, whatever you have for MBA 2 years and for engineering minimum, say 4 years, you want certain transformation in you. From a raw 12th standard student with many aspirations and dreams, you want to lead a good quality life. You want to support your family, you want to do something for your society, and you want to have your own benchmark, तुमचं अस्तित्व, तुमचं नाव. You want to be a somebody, and to become that somebody, you need right processing. You need right inputs. You need right supervision as well as guidance. And this is the institution where everything you will get. So be rest assured. Now you have taken a decision. System is there to take care of you. Now who will ultimately help you to become what you aspire to be? मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, अब्दुल कलामांनी पण सांगितलं होतं, स्वप्न तीच असतात जी झोपू देत नाहीत. झोपेत जे पडतात त्याला स्वप्न नाही. ज्याच्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे आणि त्यामुळे मला रात्र रात्र झोप लागत नाही, त्याला स्वप्न म्हणतात. And I am very sure all of you have seen the dream to become a good person, a good human being, a good professional. For what? To help family, to grow yourself, to help society, to help nation, to help humanity. So keep that goal in mind. Friends, engineer म्हणजे काय हो? I am saying I congratulate you for engineering. But what is engineering? How it is different than any other? Why I am congratulating for you? Because you are going to become engineer. Friends, engineer is a person who is a problem solver. He is a solution provider. त्यामुळे तुम्हाला इंजिनियर व्हायचं आहे म्हणजे काय व्हायचं आहे? तर तुम्हाला सोल्युशन प्रोव्हायडर व्हायचं आहे. एक लक्षात घ्या मित्रांनो, wherever there is calamity is there, whether it is natural calamity or war like situation, you know who is on front? It's not generally military. It is engineers who make the ways for them. कुठेही मदत कार्य पोचायसाठी डिझास्टर झाल्यावर अरे पोचायसाठी मार्ग तर पाहिजे. त्यामुळे फर्स्ट टू गो इज द ग्रुप ऑफ इंजिनियर. इंजिनियर्स आर नेशन बिल्डर्स. Engineers are world builders. Engineers are humanity builders. Engineers are solution provider. मित्रांनो, जगामध्ये फक्त 2 प्रकारचे सेट्स आहेत माणसांचे. एक आहे those who provide the solutions, who are troubleshooters, who give solution to the problem. And whomsoever is not in that bracket, in that you can say set of solution provider, he is a trouble monger. He is a problem creator. दोनच प्रकारचे लोक असतात. एक तर ते सोल्युशन प्रोव्हाइड करतात आणि जो सोल्युशन प्रोव्हाइड करत नाही तो प्रॉब्लेम क्रिएट करतो. तिसरं काहीच नसतं. तुम्ही इंजिनियर होणार आहात म्हणजे तुम्ही सोल्युशन प्रोव्हाइडर होणार आहात. तुम्ही जर सोल्युशन प्रोव्हाइडिंगच्या ॲट्रिब्यूट्स तयार केल्या नाहीत तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन द सेट ऑफ प्रॉब्लेम क्रिएटर. आणि जगाला फक्त प्रॉब्लेम सॉल्व करणारे हवे आहे, प्रॉब्लेम क्रिएटर कोणालाच नको आहे. मग ते कुटुंबातही जो प्रॉब्लेम क्रिएट करतो हा बाहेर गेलेलाच बरा. समाजामध्ये सुद्धा जो प्रॉब्लेम क्रिएट करतो तो समाजाबाहेरच गेलेला बरा. म्हणून ते गावाबाहेर काढून देतात, देशाबाहेर हाकलून देतात. वन हू इज नॉट प्रोव्हाइडिंग सोल्युशन, he becomes problem creator and nobody wants problem creator. You are becoming engineer, you are becoming problem solver, solution provider. So you will be required by everybody. जगाला हवंयचे कोण? तर इंजिनियर. डॉक्टरला सुद्धा कोण हवं असतं? रोबोटिक सर्जरी. रोबोट्स कोण तयार करेल?
मेडिकल फील्ड सुद्धा आता पूर्ण टेक्नॉलॉजी ओरिएंटेड झालेलं आहे. कोण प्रोव्हाइड करेल, कोण दुरुस्त करेल त्या मशिनरी, कोण ते लॉजिस्टिक देईल? इट विल बी ऑल इंजिनिअरिंग. मी तुम्हाला 2 प्रश्न आत्ता सांगितले या स्लाइडवर. आपण खालचं स्टेटमेंट पहिले घेऊ. तुम्ही कदाचित वाचलं असेल मागच्या आठवड्यामध्ये चेअरमन ऑफ इस्रोने एक फार महत्वाचं स्टेटमेंट केलं, विच ऑल ऑफ यू विल फील व्हेरी प्राऊड अँड हॅपी. काय स्टेटमेंट केलं त्यांनी माहिती आहे? त्यांनी सांगितलं ऑपरेशन सिंदूर जेव्हा सुरू होतं तेव्हा इस्रोतले इंजिनियर्स 100 इंजिनियर दिवस रात्र झटत होते. वॉर कुठे होतं? पाकिस्तान. ऑपरेशन कोणाचं होतं? मिलिटरीचं. आणि झटत कोण होतं? इस्रोचे इंजिनियर्स. तुम्ही वंडरफुल. त्यांनी अजून एक गोष्ट सांगितली की ऑपरेशन सिंदूर इज सक्सेस ऑफ इंटिग्रेटेड इंजिनिअरिंग. स्पेस मधला इंजिनियर लोकेशन प्रिसिजन साठी गाईड करत होता. कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीचा बरोबर सगळी माहिती पुरवत होता आणि जाणून घेत होता. केमिकल इंजिनियर त्याला योग्य असलेले फ्युएल्स म्हणा किंवा बॉम्ब्स म्हणा, कुठल्या इम्पॅक्ट हवाय, किती डीप जायचं आहे, तिथे किती नुसतं फिजिकल नुकसान म्हणजे ह्युमनला नुकसान न होता फक्त त्या एस्टॅब्लिशमेंटला नुकसान करायचं आहे, ते पण प्रिसिजन कुठल्याही एस्टॅब्लिशमेंटला नाही. त्यावेळेला तो केमिकल इंजिनियर त्याच्या बरोबर एक्सप्लोजिव्ह आणि फ्युएल बद्दलची माहिती देत होता. मेकॅनिकल इंजिनियर त्याच वेळी झटत होता विच इज द राईट मटेरियल, जे लोकेट तर होणार नाही पण इम्पॅक्ट बरोबर देईल. सिव्हिल इंजिनियर त्याच्या मागे पूर्ण तयारी करत होता, त्याच्या फ्लाइट्स कशा राहतील, त्याचं लॉन्चिंग कसं होईल. इट वॉज द क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ इंटिग्रेटेड इंजिनिअरिंग. व्हॉट Chairman ISRO wants to say, it is the age of integrated engineering. तुमच्यापैकी कोणी मेकॅनिकलला ऍडमिशन घेतली असेल, कॉम्प्युटरला घेतली असेल, कुठल्याही ब्रँचला घेतली असेल, कदाचित मला कॉम्प्युटर हवं होतं मिळालं नाही, काय बाबा मला मेकॅनिकल घ्यावं लागलं. डोंट फील एनिथिंग अबाउट इट. इंजिनिअरिंग ब्रँच आता अशी आयसोलेशन मध्ये, स्टँड अलोन मध्ये, सायलोज मध्ये नाही. इट हॅज बिकम कम्प्लिटली मल्टीडिसिप्लिनरी. मी तुम्हाला NEP वर जेव्हा सांगेन, हा जगाची आणि आता प्रोफेशनची नीड आहे. नुसता मेकॅनिकल इंजिनियर, नुसता कॉम्प्युटर इंजिनियर कोणालाही कामाचा नाही. इट इज द एज ऑफ इंटिग्रेशन. इस्रोच्या चेअरमनचं जे स्टेटमेंट आहे, ऑपरेशन सिंदूर was successful other than other things. One of the reasons was approach of integrated engineering. What is the takeaway from his statement for you and me? Please don't live in silos. मी मेकॅनिकलचा आहे, मला काय करायचं आहे सिव्हिलच्या लॅबला जायला. मी सिव्हिलचा आहे, मला कशाला जायचं आहे कम्प्युटरला. मी कॉम्प्युटरचा आहे, जगाला फक्त सध्या कॉम्प्युटर हवे आहे. मी इतर इंजिनिअरिंगला तुच्छ लेखतो. जर तुम्ही या माइंडसेट मध्ये असेल तर आज या हॉलमधनं बाहेर पडताना ते इथेच सोडून जा. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट विच कोर्स ऑफ इंजिनिअरिंग यू हॅव टेकन ऍडमिशन अँड यू विल बी स्टडिंग. तुम्हाला NEP मध्ये पुढे सांगतो मी, तुम्ही जर कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग शिकत असाल तर फक्त 50% अभ्यासक्रम तुम्हाला कॉम्प्युटरचा शिकायचा आहे, जो पूर्वी 90% शिकायचा आहे. आता तुमच्या कोर मध्ये ज्याला मेजर म्हणतात त्याचा अभ्यास फक्त 50% एकूण अभ्यासातला करायचा आहे. मग इतर 50 कुठला अभ्यास करणार आहे आणि कशासाठी करणार आहे हे आपल्याला आज समजून घ्यायचं आहे. आणि दुसरं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर्सेस ह्युमन इंटेलिजन्स. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या की सगळीकडे अशी खूप मोठी, आणि ती खरी आहे, चुकीचं नाही आहे, की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे सगळे जॉब घेऊन घेणार आहे. एक रिपोर्ट आलाय वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा आता 2025 ला, की येत्या 3-4 वर्षामध्ये 90 लाख जॉब, 90 मिलियन जॉब हे नष्ट होणार आहेत. घाबरायजोगीच गोष्ट आहे. अरे मग आम्हाला जॉब नाही राहणार का? When World Economic Forum, all those
who are at the strategic position, they are saying that AI is going to revolutionize and 90 million jobs will be taken away. They will not remain in the market. 90 million jobs असे राहतील की जे इतिहास असं पूर्वी जॉब होता. पण हे अर्धवाक्य आहे. दुसरं वाक्य असं आहे 150 million न्यू जॉब्स आर कमिंग इन 3 years. आता जर मी त्या 90 मिलियन जॉब जे स्किल सेट्स होते तेच घेऊन बसून काम करत राहिलो तर कदाचित मी ऑब्सोल्यूट होईल, मला जॉब राहणार नाही. पण 150 मिलियन नवीन जॉब प्रोफाईल्स येतात आहे. तुम्हा लोकांना लक्ष जे ठेवायचं आहे कुठले 150 मिलियन नवीन जॉब येतात आहे, व्हॉट आर दोज एरियाज, व्हेरी क्लिअरली दे आर गिवन. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची फार भीती बाळगायची गरज नाही आहे मित्रांनो. दुसरं एक कारण आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची खूप भीती बाळगायची आणि हातपाय गाळून बसायची का गरज नाही. जे दोज हु आर वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, लेट देम बी सायंटिस्ट, let them be engineer, or let them be the companies who are coming with various AI tools. One line is common. Since computer came into existence, from that day, everybody was trying to replace human being using computing system. But now over almost 100 years of their hard work and research, one common statement is there from everybody who is in computer and artificial intelligence, and that common statement is in no way neither computers nor artificial intelligence can take over human intelligence. So understand the difference between artificial intelligence and human intelligence. All of us are human. No machine can take over with the humans, and that I am not saying. All doyens of this industry, scientists, engineers and industry people are saying that we have tried for last 100 years, but all of us have come to common conclusion, AI can never take over human intelligence. मित्रांनो लक्षात घ्या गेल्या 300 वर्षात काय झालं. 1800व्या शतकात इथे मॅनेजमेंटचे टीचर्स असतील, they may correct me. There was in 18th, you can say 19th century or in somewhere after 1800, the year 1800, first scientific management theory came. Probably he was Taylor, Frederick Taylor. Sir correct करा management faculty असेल तर. That Frederick Taylor ni, he has proposed scientific management theory and humanity साठी for last so many years everybody has followed it, but after 3 centuries everybody has understood probably that was the wrong step. Why? Because scientific management theory tried to convert human into machine. That scientific management principle, work motion study, and the human should work like machine. With that philosophy and with that principles, those scientific management theory came into existence. Later on, Henry Feuer, a mining engineer, he come with his own theory, and he has given 14 principles, and those principles were unity of command, unity of order, discipline, and he said that no, human beings should work like machines only, then only productivity will be there, then profitability will be there. Then later on classical theory of management came. They have practically equated human being into machine, and that theory itself stated that humans should work like machines. Later on, Peter Drucker, probably the knowledge, you can say era, knowledge management, that theory had come. There he first acknowledged that humans are not machine. So people really don't only work for bonus, salary and physical things. There is something social component,
something emotional component. So man is not driven only by money. Earlier theories were saying that man is driven only by money. And our ancient philosophy, what does it say? Karma Yoga. Whatever duty is given to you, that is your dharma. अर्जुना तुला बाण उचलायचा आणि मारायचा आहे, युद्ध करणं आहे तुझा धर्म आहे. मी करत नाही काय होईल, दॅट इज नॉट युअर जॉब. आणि तुझं कर्म करणं, वर्क इज वर्शिप, युअर कर्म इज युअर धर्म. आणि अबाउट दॅट कर्म करायचा तुला अधिकार आहे, फळाचा अधिकार नाही. कर्मण्य अधिकार असते वगैरे जे म्हणतात आपले. सी दॅट वॉज द फिलॉसॉफी with which centuries together this humanity in this continent, Indian context, people had that type of mindset that doing duty is my first worship and that is my dharma. काम मला जे मिळालेलं आहे, कुठलं काम मिळालेलं नाही, मला शिक्षकाला काम शिकवायचं दिलेलं आहे, त्यांनी सर्व जीव ओतून शिकवणं तोच त्याचा धर्म. आणि मग मला किती पगार मिळतो आणि पगार रेग्युलर मिळतो की नाही, दॅट इज अ डिफरंट इश्यू. मला पगार मिळत नाही म्हणून मी शिकवत नाही, हा कन्सेप्ट आपल्या फिलॉसॉफीतच नव्हता. नाऊ वर्ल्ड इज अगेन आफ्टर 3 centuries इज कमिंग टू दॅट की यू डू युअर ड्युटीज अँड देअर कम्स ह्युमन इंटेलिजन्स. इमोशनल कोशंट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर इंटेलिजंट कोशंट. Your along with your, you can say, duty as an individual, your commitment to community, your commitment to environment, your commitment to ecosystem, your commitment to those with whom you work, that is what is equally important other than the machine with which you are working. There comes the difference between artificial intelligence and human intelligence. Machines will never understand. They don't have any emotions. They won't understand. Whatever program is given, what is order is given, that they will do. Earlier management theories unfortunately converted humans into machine. That is why the problems came. That is why we fear, oh, job जातील का? अरे we are not machines. मशीनची आउटडेटेड होईल, मशीनचा जॉब जाईल, ह्युमनचा जॉब जात नाही. बिकॉज मग कशात आहे, हाऊ आर वी डिफरंट दॅन मशीन, हाऊ आवर ह्युमन इंटेलिजन्स इज सेपरेट दॅन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. जे रुटीनचं जॉब आहे ते मशीन करेल, पण नॉन रुटीन जॉब जे आहेत, जिथे पॅटर्न्स नवीन बनवायचे आहे, जिथे क्रिएटिव्हिटी येणार आहे, तुमची दिलेली स्टोरी त्या चॅटबॉट मध्ये तो तुम्हाला त्याला फीड केलेलं माहिती देईल, तो क्रिएट नाही करू शकत. So this is what is accepted and this is precisely in coming when you will be learning for these 4 years. What is the aim you have to keep in mind? You have to keep in mind that earlier, before your all batches, what unfortunately our education system was doing because of the mandate of all management theories, management gurus, हेनरी फोयरनी काय सांगितलं, फ्रेडरिक टेलरनी काय सांगितलं, हे आम्ही डोक्यात घेतलं, आम्हाला तेच सांगितलं आणि आम्ही तीच शिक्षण सुरू केलं आणि आम्ही माणसाला मशीन करत राहिलो. म्हणून यू विल फाइंड युअर अर्लियर अभ्यासक्रम, ऑल युअर करिक्युलम अँड सिलेबी, they were only talking about principles, laws, mathematics, automation, how the things run, how you should run the machines, how you should design. That was the only thing we were also teaching. Students were also learning. Unfortunately, we were making machines. And real Vivekananda ji also said, education is man making machine, it is not machine making machine. You can say effort. Now in NEP, we are again reshifting ourselves. Really, we are going in the right track. From machine making system, what was earlier education, now NEP tries to bring it back to man making system. So that is the fundamental difference, and I again congratulate you people because you are at the right stage where an NEP is being implemented. It is in the second year of implementation only.
So 1 year experience is there, but all those unfortunate batches, including mine, we were given that type of education where man was converted into machine. Now you are lucky that you will be getting the education where man, you are in the system where man making will take place. That is why now whatever earlier in school the approach you had, or whatever your seniors will tell you, or whatever old people like me प्रॉबेबली विल टेल, अरे हेच करायला पाहिजे, अशीच परीक्षा दिली पाहिजे, असेच मार्क मिळवले पाहिजे. त्यांचा आदर जरूर करा, त्यांना नमस्कार करा की सर, मार्कांच्या मागे आणि स्पर्धेच्या मागे लागायला आम्ही ना घोडे आहोत ना आम्ही मशीन आहोत. आम्हाला चांगला मनुष्य बनवायचं जे शिक्षण येत आहे, आम्हाला त्या पद्धतीने आता शिक्षण घेऊ द्या. आणि इन द बिगिनिंग वेन यू विल गो आउट ऑफ दिस हॉल, पहिला तुमच्या डोक्यातला भुसा काढून टाका पूर्ण, जे आजपर्यंत तुम्ही वयाच्या 18-19 पर्यंत बसला होता, ज्या शिक्षण पद्धतीतून तुम्ही आलात. आता तुम्हाला कुठल्या टाईपचं शिक्षण घ्यायचं आहे. सगळ्यात पहिले एज ऑफ कॉम्पिटिशन इज ओव्हर. हाय स्टेक एक्झामिनेशन, वर्षाच्या शेवटी एक परीक्षा देतो आणि त्यात मी खूप मार्क मिळवतोय. आमच्या वेळी एका महिन्यामध्ये अभ्यास केल्याने खूप चांगले मार्क मेरिट मध्ये येणं शक्य होतं. तुमचा 12 महिन्याचं वर्ष, त्यातले 10 महिने झोपा काढा, शेवटच्या 11व्या महिन्यात जे पुस्तकं दिली आहे ते रट पाठ करा, ते पेपर मध्ये ओका, यू विल बी इन मेरिट. गॉन आर द दोज डेज. नाउ high stake examinations, competitive examinations, scoring something, that will go. It will be all about your portfolios, what you have learned. That is what we will try to understand. What are the different opportunities? Are you ready now? Now from machine making system to man making system you are entering. Are you mentally ready to accept? हो नाही, तुम्हाला हा जो बदल येतो आहे तो तुम्हाला आवडेल ऐकून घ्यायला? Probably no or yes. So let us go. If you are yes, then we will go. Now this is what we will try to understand. कसं करायचं सर? हा, ओके. सगळ्यात पहिले एज्युकेशन म्हणजे काय पासून आपण या एनईपी मध्ये सुरुवात करूया. Probably this is the policy which is evolved over the 20-25 years. ही लक्षात घ्या. ही पॉलिसी अशी 4 वर्षापूर्वी एक कमिटी बसली आणि तिने काही डॉक्युमेंट दिला आणि ती पॉलिसी म्हणून आली. इट्स नॉट लाईक दॅट. There are many international and national things which had happened, and everything has its own effect in evolving this policy. Last आपली पॉलिसी 85-86 ला आली होती. भारतामध्ये एज्युकेशन पॉलिसीज पहिलेही होत्या. राधाकृष्णन कमिशन होतं, यशपाल कमिशन होतं, कोठारी कमिशन होतं. सो देयर वेर मेनी पॉलिसीज अर्लियर ऑल्सो. In 85-86 some policy came, and immediately after that India gone into Washington Accord. आणि वॉशिंग्टन अकॉर्ड मध्ये ग्लोबल लेवलला स्टँडर्डायझेशन, बेंचमार्किंग, क्वालिटी पॅरामीटर्स केम इन टू एक्झिस्टन्स. सो वॉशिंग्टन अकॉर्ड मधनं सरांना कल्पना आहे की नॅक आणि एनबीए आलं. तत्पूर्वी नव्हतं कधीच. 90 पूर्वी नॅक एनबीए नावाची गोष्ट नव्हती. दॅट वॉशिंग्टन अकॉर्ड हॅज गॉट इट्स इम्पॅक्ट ऑन दिस. इन समवेअर 1997 युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन मध्ये एक ब्रुटलँड रिपोर्ट म्हणून, तुम्हाला हे माहीत असलं पाहिजे मित्रांनो, तुम्ही लहान नाहीत आता, जागतिक स्तरावर काय घडतं हे माहीतच पाहिजे तुम्हाला. एक ब्रुटलँड रिपोर्ट आला, त्याचं नाव होतं आवर कॉमन फ्युचर. अँड दॅट डॉक्युमेंट वॉज ऍक्सेप्टेड बाय एव्हरी नेशन ऑफ दिस, यू कॅन से UNO. पाकिस्तानने स्वीकारला, भारताने स्वीकारला, पॅलेस्टाईनने स्वीकारला, इस्रायलने स्वीकारला, युक्रेनने स्वीकारला, रशियाने स्वीकारला, अमेरिकेने स्वीकारला, रशियाने स्वीकारला. काही डिफरन्सेस वगैरे काही नाही. अरे बाबा हा फार डेंजर आहे. तो रिपोर्ट काय होता की जर इमिजिएट करेक्टिव्ह ऍक्शन घेतल्या नाहीत तर येत्या 100 वर्षात पृथ्वीला धोका, अस्तित्वाला धोका आहे. मग विचार केला की ह्युमॅनिटी तर हजारो वर्षापासून आहे,
असं काय घडलं या 200-300 वर्षात की पृथ्वीचं अस्तित्वच धोक्यात आलं. मग लक्षात आलं की वी डिड मेनी रॉंग थिंग्स इन लास्ट 300 इयर्स. म्हणून कन्सेप्ट ऑफ डेव्हलपमेंट, विकासाची कल्पना मुळामध्ये चुकली. हे जगाने मान्य केलं. नाउ देअर विल बी डेव्हलपमेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. And that concept of sustainable development came into existence. And then in somewhere 2003-2004, Johannesburg Declaration came, Bon's Declaration came based on that report. And they said that concept of sustainability and sustainable development, who will bring? हा चेंज कोण आणेल? तर त्याची जबाबदारी शिक्षण क्षेत्रावर दिली. म्हणून एक होतं वॉशिंग्टन अकॉर्ड, दूसरा होता concept of sustainability and sustainable development, which resulted into many things in this policy. तिसरा नंतर आला IT revolution. IT revolution ने all sensitive sectors like finance, share market, everything got changed due to IT revolution. Only education remained aloof. But during COVID, everybody has understood the power of IT in education too. So you will find lot many things are there in NEP. So these three things. So one takeaway that this national education policy is a evolved document. It needs quality education. It needs world standard, world class education. It needs alignment of Indian education with world-class education. It needs developing the young engineers, young professionals for sustainability and sustainable development. It needs use of IT for equity, for access and for betterment. So these are integrated in this policy. So this policy begins with first thing, what is education? अहो शिक्षण म्हणजे काय? All Western thought, Socrates, Plato, all those Western thinkers' definitions are also considered. And finally, आपल्या NEP ने जी व्याख्या मान्य केली what is education म्हणजे it is manifestation of divine perfection already existed in individual. काय याचा फार मोठा अर्थ आहे याचा अर्थ पॉलिसी ऍक्सेप्ट करते की प्रत्येक ह्युमन बीइंग मध्ये ऑलरेडी डिवाइन परफेक्शन आहे हो. जसा तो थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग मध्ये त्यांनी म्हटलं त्या सायंटिस्टनी की देअर इज परफेक्शन, नाहीतर हे कसं काय ॲटम विटम राहिलंच नसतं. तसं पॉलिसी म्हणते आणि ही विवेकानंदांची स्वामीजींची डेफिनेशन आहे की एव्हरी इंडिव्हिज्युअल इज ऑलरेडी डिझाईन परफेक्टली बाय डिवाइन. आणि व्हॉट इज द रोल म्हणजे दोन व्यक्ती सारख्या नाही. या दोघी जणी बाजूबाजूला बसल्या आहेत. आपण वर्गामध्ये 60 जण असतो, ते 60च्या 60 जण इंडिव्हिज्युअल आहेत आणि ते वेगवेगळे आहेत आणि प्रत्येकामध्ये कुठली तरी एक स्पेशालिटी आहे, कुठली तरी खूबी आहे. एज्युकेशनचं काम काय? एज्युकेशनचं काम आहे त्या इंडिव्हिज्युअलला तुझ्यामध्ये ही खूबी आहे, बडा है अनवेला हजारों में अकेला. तू प्रत्येक व्यक्ती हा स्पेशल आहे. फक्त तुझ्यामध्ये कुठली स्पेशालिटी आहे ते तुम्हाला ओळखून देण्याची मदत करणारी व्यवस्था म्हणजे टीचर्स आणि एज्युकेशन सिस्टीम. पहिलं काम त्यांचं आहे की प्रत्येक व्यक्ती हा वेगळा आहे हे ऍक्सेप्ट करा आणि त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामधलं वेगळेपण आणि त्याच्यात कुठली खूबी आहे, व्हॉट इज द स्पेशालिटी, ही त्याला आयडेंटिफाय करायला मदत करा. आणि एकदा त्याला कळलं की माझ्यामध्ये हे स्पेशालिटी आहे, देन हेल्प टू मॅनिफेस्ट इट. मॅनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन. सचिन तेंडुलकरला त्याच्या भावाला तो अगदी लहान असताना लक्षात आलं याच्यामध्ये क्रिकेट खेळाची वेगळी ॲट्रिब्यूट आहे. त्यांनी पालकांचं ऐकलं नाही, प्राध्यापकाचा मुलगा नाही तर ते दोघंही. त्यांनी म्हटलं नाही नाही हे शाळा वेळा होत राहील, 10वी पास झाला नाही सचिन, त्याला मैदानावर न्या. आज जर त्याला शाळेत अटकवलं असतं तर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर मिळाला नसता. लता मंगेशकरांच्या आणि मंगेशकर फॅमिलीला त्यांच्या फॅमिलीत लक्षात आलं यांची खूबी काय आहे. लता मंगेशकर जर इंजिनियर व्हायला गेली असती तर कदाचित ना ती इंजिनियर झाली असती ना गायक झाली असती.
तुम्हाला कल्पना असेल की श्रीधर फडके असो किंवा महादेवन असो, शंकर महादेवन, हे बाय क्वालिफिकेशन इंजिनियर आहेत. अनिल कुंबळे असेल, श्रीनाथ असेल, हे क्रिकेटियर आहे बट क्वालिफिकेशन इंजिनियर आहेत. त्यांचं क्वालिफिकेशन त्यांनी इंजिनिअरिंग घेतलं, पण त्यांना कोणीतरी आयडेंटिफाय केलं, संगीत तुझा आत्मा आहे, क्रिकेट तुझा आत्मा आहे. आणि त्यांच्या सिस्टीमनी, जसं आचरेकरांनी अनेक लोक घडवले, तसे त्यांच्या शिक्षकांनी सिस्टीमनी त्यांना हेल्प केली. अँड टुडे व्हॉट सचिन इज बिकॉज ऑफ दॅट. वाय लता मंगेशकर, आशा भोसले, बिकॉज ऑफ दॅट. वेअर श्रीनाथ अँड अनिल कुंबळे आर देअर, it is because their attributes were identified. They were helped to identify their speciality and system helped men to manifest those. And this is what is education. तो मित्रांनो, दोन गोष्टी आता बिलकुल लक्षात घ्यायचा. एखादा खूप मार्क मिळवतो, बाकीच्यांनी नर्वस व्हायची गरज नाही. तो आहे, डेफिनेटली त्याचे ॲट्रिब्यूट्स आहेत त्याच्यामधले, त्याच्यात गती आहे, तो त्याच्यात पुढे जाईल. पण ज्याला एखाद्या विषयात कमी मार्क मिळाले म्हणजे तो कमी आहे असं मुळीच नाही. रिमूव्ह युअर इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स. दिस इज व्हॉट दिस पॉलिसी सेज. फाइंड आउट तुम्हाला कशात आवडतं, नाटकात आवडतं, स्पोर्ट्समध्ये आवडतं, सोशल वर्कमध्ये आवडतं. तुम्ही त्याच्यात तुमची ज्याच्यात गती आहे, जे ॲट्रिब्यूट्स आहे ते वाढवा, म्हणजे NEP. शिक्षकांचा रोल काय? माझ्या विषयात प्रत्येकाने 100 पैकी 100 मार्क मिळवलेच पाहिजे आणि तू ढप्पा आहे, हा फार हुशार आहे, हे वाक्य बंद करणं हे म्हणजे आम्हाला दिलेला मॅन्डेट आहे. अरे प्रत्येक व्यक्ती वेगळा आहे. तुझ्या विषयात गती नाही म्हणजे तो संपला असं नाही. त्याला मिनिमम पास व्हायला हवा आहे ना, ठीक आहे, यू हेल्प हिम टू दॅट. त्याला ज्यात गती आहे त्याच्यात त्याला वर घेऊन जा. सी हाऊ युअर सब्जेक्ट इज युजफुल इन मॅनिफेस्टिंग व्हॉट इज देअर इन दॅट इंडिव्हिज्युअल. होल अप्रोच विल बी इंडिव्हिज्युअलिस्टिक. तुमच्यासाठी काय आहे, तुम्हाला जे हवं, केवळ मोबाईल बसून सर मला पाहायला आवडतं मी झोपतो तसं नाही. तुम्हाला शोधा, तुम्हाला कशात गती आहे, तुम्हाला कुठल्या विषयात गती आहे, ती तुम्ही आयडेंटिफाय करा. स्वतः टीचर्सची मदत घ्या, इन्स्टिट्यूटची मदत घ्या, काउन्सिलरची मदत घ्या. तुम्हाला स्वतःतला जपलेलं तर कस्तुरी मृगासारखा आहे, तुमच्यातली कस्तुरी तुम्हाला जर ओळखता आली तर तुम्हाला करिअरची चिंता करायचीच गरज नाही. आणि दिस इज व्हॉट इज एज्युकेशन. आणि आता जेव्हा मॅनिफेस्टेशन ऑफ दॅट डिवाइन परफेक्शन करायचं आहे, NEP सांगतं 3 एरिया. कुठलाही विषय असो, तो BA चा असो, BCom चा असो, BSc चा असो, MBA चा असो, BE चा असो, 3 डोमेन मध्ये त्या मुलाला डेव्हलप करा. एक डोमेन नॉलेजचं, नॉलेज इज पॉवर. त्याला ज्याच्यात गती आहे त्यातलं अगदी ऍडव्हान्स लेटेस्ट नॉलेज देऊन त्याला नॉलेज डोमेन मध्ये परफेक्ट करून द्या. त्याला ज्या विषयात गती आहे त्या, म्हणून ते मेजर आणि मायनर येतं. पहिल्या वर्षी तुम्ही बघा 2-3 विषय घेऊन, जो तुम्हाला आवडतो, तुम्हाला असं मी पहिलेच सांगतो, सगळ्या विषयांना स्कोप आहे, हे डोक्यातून काढून टाका. कॉम्प्युटरला खूप स्कोप आहे, मेकॅनिकलला स्कोप नाही, बिलकुल चुकीची समजूत आहे. एव्हरीबडी विल गो फॉर इंटिग्रेटेड इंजिनिअरिंग इन्क्लुडिंग मॅनेजमेंट. त्यामुळे स्कोप नाही हे डोक्यातून काढा. तुम्ही ज्यात परफेक्ट बाहेर याल त्याच्यात तुमच्यासाठी जग हात समोर करून उभारलाय. फक्त तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्हर व्हायचा आहे, सोल्युशन प्रोव्हायडर व्हायचा आहे. विसरून जा की कुठल्या विषयात गती नाही, आपला स्कोप नाही वगैरे, बिलकुल चुकीची गोष्ट आहे. सगळ्यांमध्ये स्कोप आहे. मग तुम्हाला ज्यात गती आहे त्याच्यामधलं पूर्ण नॉलेज घ्या. गो इन टू डेप्थ, टेक कम्प्लीट ब्रेड. दुसरं स्किल, टेक 21st century स्किल. त्यामुळे तुम्हाला नॉलेज, नुसतं नॉलेज असून काय फायदा. मला सगळं पाठ आहे, करायचं काय आहे पाठ करून. मला सगळं समजलं, करायचं काय नुसतं समजून. मला पाठ आहे, मला समजलं, मला अप्लाय करता येतं का, मला त्याच्यात अनालिटिकल करता येतं का, मला क्रिटिकल थिंक करता येतं का. जसं मी सांगितलं, मशीन आणि माणसातला फरक, मशीनला अनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव्हिटी, न्यू सिंथेसिस, न्यू पॅटर्न मेकिंग येत नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विल नेव्हर एबल टू डू थिंग्स. आपल्याला मनुष्य व्हायचं आहे, मॅन मेकिंग. आपल्याला क्रिटिकल थिंकर झालं पाहिजे, अनालिटिकल थिंकर व्हायचं आहे. कसं व्हायचं आहे, मला ज्या विचारात गती आहे त्यात मी फुल नॉलेज घेईल. नुसतं नॉलेज म्हणजे हे माहिती असून
पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, हा माहित असून करायचं काय? मला न्यूटन्स लॉ माहिती आहे, हा करायचा काय? मला आर्किमिडीज प्रिन्सिपल माहिती आहे, करायचं काय? नुसतं डिस्क्रिप्टिव्ह नॉलेजनी चालता येणार नाही. तुम्हाला हे क्रिटिकल थिंकिंग करायचं आहे. व्हाय दिस फॅक्ट्स आर ट्रू, का ते खरं आहे? न्यूटन्स म्हणतो झाडाखाली बसला, सफरचंद वरतून खाली आलं. अरे बाबा, ज्या झाडाखाली बसला ते झाड तर जमिनीतून वर गेलं ना. जर कुठलीही गोष्ट वरून खाली येते तर मग झाड कसं खालून वर केलं? दिस इज व्हॉट यू हॅव टू थिंक अँड यू हॅव टू डेव्हलप दॅट टाइप ऑफ व्हाय. कधी विचार केलात का आपण की ठीक आहे न्यूटनचं वरतून सफरचंद खाली, अरे ते सफरचंद वर गेलं कसं? नंतर पडलं ते. सो दिस इज व्हॉट इज टू बी थॉट एव्हरी टाइम नाऊ यू अँड मी. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे बिहेवियर, ॲटिट्यूड, डिस्पोजिशन्स, व्हॅल्यूज आणि इथिक्स. इथे येतो की व्हाय वी शुड हॅव स्पिरिच्युअल बेंड ऑफ माइंड, व्हाय व्हॅल्यूज, इथिक्स. 300 वर्षाच्या प्रयोगानंतर आता जगाने हे मान्य केलं की नुसतं नोईंग, खूप नॉलेज आहे, खूप स्किल आहे. अनेक शिक्षक तुम्ही पाहिले असतील आणि आम्ही पण नेहमी पाहतो. मुलं म्हणतात, आम्ही म्हणतो की सरांना खूप येतं, खूप नॉलेज आहे, पण ते वर्गात शिकवत नाही. होतं दैनंदिन जीवनात. खूप हुशार, खूप सगळं स्किल, त्या ट्विन टॉवरवर बॉम्ब टाकून दिले, उद्ध्वस्त करून टाकलं. उपयोग काय नॉलेज आणि स्किलचा जर डिस्ट्रक्शन कडे जात असाल तर? म्हणजे केवळ नॉलेज आणि स्किल असून चालत नाही, त्याच्यासोबत तेवढं स्ट्रॉंग पाहिजे तुमची व्हॅल्यू सिस्टीम, तुमची इथिक्स सिस्टीम, तुमचे बिहेवियरल सिस्टीम, तुमचे डिस्पोजिशन. व्हॅल्यूज तुम्हाला व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग सांगतील, पण तुमचं बिहेवियर हे त्याचं जे तुमचं मोटिवेशन जे कामाचं असतं ते तुमच्या बिहेवियरने होतं. आणि बिहेवियरचं सगळ्यात मोठी बेस असते तुमचं डिस्पोजिशन, तुमचं कल्चर, तुमचे संस्कार, तुमच्या व्हॅल्यूज, तुमच्या इथिक्स. म्हणून NEP सांगतं की नुसतं एज्युकेशन म्हणजे मॅनिफेस्टेशन करून चालणार नाही. 3 विंग्स मध्ये ते डेव्हलप करणं, मॅनिफेस्ट करणं म्हणजे शिक्षण देणं. व्हॉट इज द टेक अवे? तुम्हाला यापुढे शिक्षण घ्यायचं आहे म्हणजे काय? पहिले तुम्हाला स्वतःला ओळखायचं आहे, स्वची ओळख करायची आहे. आणि ती स्वची ओळख करून तुम्हाला कशात गती आहे ते आयडेंटिफाय केलं की त्या विषयात तुम्हाला नॉलेज पूर्ण डीप बुडून जायचं आहे. की तुमच्यापेक्षा कदाचित कोणी नॉलेजेबल नाही 4 वर्षात बाहेर निघालं तर इतकं मला नॉलेज त्या, कारण माझ्या आवडीचा विषय आहे, त्याच्यासाठी काही कोणी लादलं नाही आहे माझ्यावर. डिसिजन म्हणून मी कॉंग्रॅच्युलेट केलं सुरुवातीला की तुम्ही या स्टेजला आलाय की तुम्ही डिसिजन घेऊ शकता. नॉलेज घ्या, त्यातलं 21st सेंचुरीला आवश्यक असलेलं स्किल घ्या पूर्ण. आणि तिसरं तुमचं व्हॅल्यू इथिक्स. ह्या इन्स्टिट्यूट इतकं चांगली जागा कुठे आहे की जिथे हे तिन्ही कंपोनंट तुमच्या लॅब्स पाहून आलं, सरांनी मला दाखवल्या. मला नाही वाटत कुठेही अशा सारख्या इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड इतक्या ऍडव्हान्स नॉलेजच्या लॅब्स आहेत. So you will be getting best of the knowledge. Library is best, your faculty is best. All resources are available to seek knowledge. You will get best of the 21st century skills in your laboratory. Simultaneously, you will get best of your attitude development, mindset development, values development, ethics development, dispositions, thereby your behavioral changing. So when all these things, this is what you have to, or you have to manifest, you have to develop yourself, then that will be what. सगळं हे केलं हो, फायदा तर घेतला पाहिजे तुम्ही. का घ्यायचा फायदा? कारण लाईफ तुमचा आहे. का घ्यायचा फायदा तुम्ही? कारण तुम्हाला एक सोल्युशन प्रोव्हायडर व्हायचं आहे. NEP मध्ये एम पण अतिशय क्लिअरली दिलेला आहे. एम हेच दिलंय की कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट सोबत इंडिव्हिज्युअलला 21st सेंचुरी स्किल्स पण द्या, पण त्याच्यासोबत त्याचं कॅरेक्टर बिल्डिंग झालं पाहिजे, त्याला होलिस्टिक डेव्हलपमेंट. दॅट इज द एम. तुम्हाला ह्या एम तुमचं पूर्ण झालं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाची दुसरी लाईन आहे, कशासाठी एज्युकेशन घेताय तुम्ही? यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ टू लीड मिनिंगफुल अँड सॅटिस्फाईंग लाईफ. सक्सेसफुल लाईफ शब्द वापरला नाही मित्रांनो. यशाची व्याख्या प्रत्येकाची वेगळी असते. कोणी मोठमोठा डॉक्टर होतो आणि आदिवासी एरियात जाऊन
राणीबंग आणि अभयभंगात सारखं काम करतो. कोणी मोठा डॉक्टर होतो, प्रकाश आमटे सारखा जाऊन गडचिरोलीत काम करत बसतो. त्यांना जर आपण यशस्वी आहेत का तर लोक म्हणतील मूर्ख आहे. त्यांच्या बरोबरचे डॉक्टर तर केवढे करोडो रुपये कमवले, अमेरिकेत गेला, इकडे गेला. यशाची व्याख्या ती नाही. अर्थपूर्ण जीवन, सुखी जीवन. तुम्हाला प्रत्येकाला अर्थपूर्ण जीवन जगायचं आहे. तुम्ही विचार करा मित्रांनो, कौन बनेगा करोडपती मध्ये आजही 85व्या वर्षी अमिताभ बच्चन का काम करतो? पैशाची कमी आहे? नावाची कमी आहे? आजही अंबानी काय का काम करतात? शिवशंकर भाऊ शेवटच्या श्वासापर्यंत का काम करत होते? काय कमी होतं त्यांना? ते आहेत आपले आदर्श. का करत होते? बिकॉज दे वेअर लिडिंग अर्थपूर्ण जीवन आणि सुखी आणि समाधानी जीवन. तुम्हाला या 4 वर्षात किंवा MBAच्या मुलांना 2 वर्षात काय करायचं आहे त्याचं फाउंडेशन तयार करायचं आहे. आजपासून 8 वर्षांनी सोमाणी सरांनी जर विचारलं इथल्या कुठल्याही मुला मुलीला, का ग तू काय करते, का रे तू काय करतो, तर तुमचं उत्तर हेच पाहिजे की सर मी आय एम हॅपी. ठीक आहे, प्रगती तर होत राहील. आय एम लिडिंग सॅटिस्फाईड लाईफ. सॅटिस्फॅक्शन पैशाने येत नाही. पैसा आला की झोप पण नाही लागत. त्याच्यासाठी तुम्ही आज 4 वर्ष मेहनत करायची आहे. दुसरं, फॉर फ्युचर जॉब रोल्स. मित्रांनो तुम्हाला कल्पना आहे सातत्याने टेक्नॉलॉजी बदलते, सातत्याने जॉब रोल्स बदलतात, पण देअर आर समथिंग विच आर कॉन्स्टंट विच डू नॉट चेंज. तुम्हाला आजपासून तुम्ही या 4 वर्षात इंजिनियर होणार आहात का? आन्सर इज नो. यू विल बी क्वालिफाईड टू बी इंजिनियर. हे लक्षात घ्या. 4 वर्षाच्या अभ्यासक्रमांमधून 8 सेमिस्टरच्या परीक्षा देऊन कोणीही इंजिनियर होत नाही. तो क्वालिफाईड टू बी इंजिनियर होतो आणि त्यानंतर 3-4 वर्ष जेव्हा तो एक्सपेरियन्शियल करतो सगळं, तेव्हा खरं लर्निंग होतं. आपली डिग्री आणि 4-1 वर्षाचा प्रत्यक्ष कार्यानुभव, मग तुम्ही इंजिनियर होत जाता. त्यामुळे तुम्हाला आजपासून 6 वर्षांनी 7 वर्षांनी तुमच्या आवडीचं क्षेत्र जे निवडलंय अभ्यासासाठी, त्यात काय फ्युचर जॉब रोल्स राहणार आहे, तिथे तुम्हाला काय नेमकं काम करायचं आहे, त्या कामासाठी तयार होणं म्हणजे हे 4 वर्षाचा पिरियड आहे. आता इमॅजिन करा, तुम्ही आराम करू शकता का? 24 तासाचे 28 तास करावे लागतील जेव्हा तुम्ही स्वतःला प्रिपेअर कराल. जेव्हा वॉर्स आर ऑलवेज फॉट इन पीस पिरियड. युद्धाच्या वेळेला सैन्य तयार नाही होत. सैन्याला युद्धाच्या वेळेला ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावं लागू शकतं त्यापेक्षा कठीण परिश्रम त्याच्या ट्रेनिंग मध्ये त्याला केल्या जातं. त्यावेळेला तो युद्धासाठी तयार होतो. तुमचंही आयुष्याचं युद्धच आहे. प्रत्येकाला आपापलं धर्मयुद्ध लढावं लागत असतं, प्रत्येकाला आपापलं कर्मयुद्ध लढावं लागत असतं. प्रत्येकाचं आयुष्य कुरुक्षेत्र असतं आणि तिथे तयार होण्यासाठी आज तयारी करावी लागते. तुम्हाला कल्पना असेल महाभारतातली की 12 वर्ष अज्ञातवास आणि ह्याच्यात वनवासात जेव्हा पांडव होते त्यावेळेला ते सगळेजण रोज तयारी करायची. तो अर्जुन नवीन नवीन कला शिकत होता, युद्ध निपुण होत होता, नवीन नवीन धारी सगळ्या त्या स्किल्स घेत होता. तेव्हा तर ते तर वनवासात होते 12 वर्ष. 1 वर्ष तर अज्ञातवासात होतं. बृहन्नाडा म्हणून बाई म्हणून तो नाचत होता. पण त्याला हे माहिती होतं माझं युद्ध पुढे आहे. त्या 13 वर्षात जर त्यांनी स्वतःला स्किल केलं नसतं, अपग्रेड केलं नसतं, तर फ्युचर वॉर साठी तयार केलं नसतं, तर युद्धामध्ये काय केलं असतं? कौरव तर सतत युद्ध करत होते, याच्यावर युद्ध कर, प्रॅक्टिस कर. पांडव तर, पण पांडव जे जिंकले बिकॉज ड्युरिंग दोज 12 years दे वर प्रिपेरिंग फॉर फ्युचर वॉर. तुम्हालाही तुमच्या आयुष्यात 4 वर्षानंतर जे धर्मयुद्ध करायचं आहे, जे अर्थयुद्ध करायचं आहे, प्रत्येकाला वर्ल्ड इज नॉट बेड ऑफ रोजेस. प्रत्येकाला कसून प्रत्येकाची कसोटी लागत असते. त्या वेळेसाठी तुम्हाला तयार व्हायचं असेल तर या 4 वर्षामध्ये नॉलेज असेल, स्किल असेल, बिहेवियर असेल, पूर्ण सगळ्या गोष्टीचा फायदा घ्या. पूर्ण स्वतःला फुल इक्विप करून घ्या. देन ओनली you will say that purpose of education is solved. And last is to be enable economic independence. आर्थिक
स्वयंपूर्णतेशिवाय पाहिलं नाही तो ट्रम्प कसे डोळे वटारतो, पण त्याला भारत उत्तर एवढ्याच साठी देऊ शकतो की आपण इंडिपेंडन्सी आपली आहे, आपण आपल्या पायावर नाहीतर त्या मुनीरला कुटसूट पाळून जावं लागतं, बिकॉज दे आर नॉट इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट. जे आपल्या शेजारी राष्ट्रात आपल्या राष्ट्रात आहे तेच तुमच्या आमच्यासाठी आहे. एक मग त्या विशेषतः माझ्या मुलींना मी सांगू इच्छितो की तुमचं इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर, कारण पुरुषांना भारताच्या पुरुष प्रधान व्यवस्थेमध्ये लाडोबा करत आईबाप सांभाळून तरी घेतात, पण मुलींनो तुम्ही हे आजच लक्षात घ्या की तुम्हाला पूर्णपणे इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्सी, याचा अर्थ काही तुम्हाला कोणावर जास्तीचं हे करून कुठसूट डायव्हर्स घेत फिरायचं नाही आहे, पण इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स इज इम्पॉर्टंट फाउंडेशन फॉर मिनिंगफुल अँड तुम्ही खुदी कपोर बुलंदीत ना, तुम्हीच जर पॉवरफुल नसाल तर काय इतरांना मदत कराल? भिकारी काय मदत करणार आहे? भिकाऱ्याला मदत करायसाठी तुम्हाला स्ट्रॉंग व्हावं लागतं, त्याच्याशिवाय इतरांना मदत करता येत नाही. त्यामुळे मिनिंगफुल लाईफ, रेडी फॉर फ्युचर जॉब रोल्स आणि भविष्यात इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स हे येण्यासाठी शिक्षण घ्यायचं आहे. म्हणून शिक्षण म्हणजे काय? शिक्षणाचे ते पोर्टफोलिओज कुठले? तुमच्यासाठी हे पॉलिसी काय सांगते की कम्प्लीट रिएनर्जाइज करा हायर एज्युकेशन. जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी, जे कवींनी म्हटलंय एज्युकेशनच्या बाबतीत हे येत आहे की जुन्यावर जाऊ नका, जुन्या पद्धतीने विचार करू नका, जुन्या पद्धतीचे प्रिपरेशन्स करू नका, कम्प्लिटली रिएनर्जाइज करायचं आहे. आणि आपल्याला काय चेंजेस येणार आहे तर पहिल्यांदा मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन, म्हणून मी मध्ये मध्ये मराठी आणि इंग्रजीत बोलतो. मी आय हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम ऑनरेबल प्रिन्सिपल सोमानी सर. सर should I have blended mode of delivery? He permitted me. Reason was this, because आता भाषा बॅरियर नाही. आज कदाचित येणार नाही, उद्या सरांकडे ऑटोनॉमी आली की सर कदाचित करतील की एखादा प्रश्न इंग्रजीत विचारला, कारण आपलं ऑफिशियल मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इंग्लिश आहे, पण त्या विद्यार्थ्यांनी म्हटलं जरी कॉन्व्हेंट एज्युकेटेड असला तरी कधी कधी आपल्याला एक्सप्रेस करता येत नाही चांगलं इंग्रजीत. समजलं असतं, येत असतं, पण इंग्रजीत लिहिता येत नाही. आता अशी व्यवस्था येईल कदाचित, अशी अपेक्षित आहे की प्रश्न जरी इंग्रजीत विचारला पण मी जर सांगितलं की नाही मला मराठीत चांगलं येतं हे लिहिता, राईट इन मराठी. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू असेस व्हॉट यू नो. दॅट इज नॉट द पेपर टू असेस युअर इंग्लिश, इट इज पेपर टू असेस युअर टेक्नॉलॉजी नॉलेज, युअर टेक्निकल नॉलेज. आम्ही वायवा घेताना अनेकदा म्हणतो त्या विद्यार्थ्याला असं तो अडखळतो, ही कॅनॉट स्पीक. सहजच म्हणतो आम्ही की ठीक आहे इंग्रजीत नाही येत का तुला, मराठीत सांगता येत असेल का, हिंदीत येतं का, उत्तर तू सांग, चालेल आम्हाला. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. त्यामुळे मित्रांनो ही भीती काढून टाका. ज्यांना इंग्रजी येत नाही, खूप हायफाय कॉन्व्हेंट मधून शिकून आलेला, यार मला स्वतःला ना डिफिटेड वाटतं, मी ना इन्फेरियर समजतो, काय स्मार्ट आहे, काय भडबड बोलतो, काय पर्सनॅलिटी आहे. भाषेवरून पर्सनॅलिटीचे दिवस गेले. नॉलेज काय आहे, अंडरस्टँडिंग काय आहे, तुमचं बिहेवियर काय आहे त्याच्यावर. त्यामुळे नॉलेज हा बॅरियर राहणार नाही आणि मल्टी डिसिप्लिनरी एज्युकेशन होणार आहे आणि ऑटोनॉमीकडे जाणार आहे. मल्टी डिसिप्लिनरी म्हणजे काय? पूर्वी एखादा कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतली तर त्याचे जवळजवळ 80% विषय हे फक्त कॉम्प्युटर रिलेटेडच असायचे. इंजिनिअरिंग मध्ये फक्त इंजिनिअरिंगच शिकवल्या जायचं. आता मान्य केलेलं आहे की मनुष्य एका मोनोडिसिप्लिन मध्ये, एका सायलोज मध्ये राहून जगत नसतो. त्याला काम करताना इतर लोकांशी संबंध असतो, त्याला ह्युमन रिलेशन्स आले पाहिजे, त्याला इंटरपर्सनल रिलेशन्स आले पाहिजे, त्याला चांगलं समजून घेता आलं पाहिजे, म्हणून त्याला ह्युमॅनिटीजचं असलं पाहिजे. कॉमर्स शिवाय आपण सकाळी उठलो पहिले आपण घेतो टूथपेस्ट, अरे फुकट नाही येत ती. फायनान्शियल लिटरसी मस्ट आहे. पैसा नको पैसा, अरे पैशाशिवाय होत नाही. अवैध मार्गाने उगाच पैसे नको जरी असले तरी पैशाशिवाय पण होत नाही. फायनान्शियल लिटरसी ही प्रत्येकाला असलीच पाहिजे. आहे का आज आपल्याकडे? ते म्हणतात ती पण असली पाहिजे. कॉमर्स असलं पाहिजे,
व्यवस्थापन असलं पाहिजे, ह्युमॅनिटीज असलं पाहिजे, कल्चर असलं पाहिजे. तुम्हाला प्रत्येकाला संगीताचा तानसेन होता नाही आलं तरी कानसेन होता आलं पाहिजे. तुम्हाला ते आयुष्यातले हे सगळे रंग, सगळे आस्वाद घेता आले पाहिजे. तुमचं जेंडर सेन्सिटाईज असले पाहिजे. आज म्हणजे माझ्या काळामध्ये माझी बॉस जर लेडी असेल तर पहिले तर माझ्या डोक्यावर आठा यायची, ही बाई माझी बॉस, आता हिला सकाळ संध्याकाळ सलाम करावा लागेल मला. म्हणजे एक स्त्री बॉस ही सुद्धा मला ऍक्सेप्ट नव्हतं. ट्रान्सजेंडरचं तर सोडूनच द्या. मला एखादा माझा मित्र असेल ट्रान्सजेंडर असेल, तो जर चौकात भेटला आणि मला आवाज दिला आणि बोलतो म्हटलं तर मी पहिले आजूबाजूला पाहतो, कोणी मला पाहत तर नाही आहे ना याच्यासोबत मी बोलतोय. त्याला म्हणतो चल चल बाजूला बसू, आपण तिकडे बोलू 4 लोकांसमोर. इतकं आपण डिफरन्सिएशन लोकांच्या व्यक्तीमध्ये करतो ऑन जेंडर. उद्याच्या काळात जिथे तुम्ही काम कराल तिथे कदाचित तुमचा कलीग, तुमचा सुपरवायझर किंवा तुमच्या अंडर काम करणारा मेल असेल, फिमेल असेल, ट्रान्सजेंडरही असेल, पण तो माणूस आहे. आणि जिथे जो जेंडर बेस्ड डिफरन्सिएशन करेल तो उद्याच्या सिस्टीम मध्ये राहू शकणार नाही. आपल्या शिक्षणामध्ये हा कधीच घेतला नव्हता. आता NEP म्हणतं ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही अंतर्भाव केला पाहिजे. महत्वाचा आहे कम्युनिटी एंगेजमेंट अँड सर्व्हिस. युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेजची व्याख्याच बदलली आहे NEPने. मित्रांनो, हा तुमच्यासाठी महत्वाचा व्हर्टिकल आहे. पूर्वी NSS मध्ये काम करतो किंवा स्पोर्ट्स मध्ये भाग घेतो, गॅदरिंग मध्ये भाग घेतो, हे माझं काम नाही, मी अभ्यास करतो, गॅदरिंग आलं का मी घरी जातो. NSS मी नाही करत कधी NSS मध्ये. NCC ते माझं काम नाही. कुठे कम्युनिटी सर्व्हिसेस आहे नाही, ते काय रस्ते झाडा वगैरे असले धंदे मी करत नाही, मी अभ्यास करतो. आता व्याख्याच बदलली आहे. युनिव्हर्सिटी असो की कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी मध्ये जिथे हाय क्वालिटी टीचिंग, हाय क्वालिटी रिसर्च आणि कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्रत्येक शिक्षकाचं यापुढे जे असेसमेंट होणार आहे त्याचं प्रमोशन असो, त्याचं रिक्रुटमेंट असो, त्याची अॅन्युअल परफॉर्मन्स असो, त्याच्यात कम्युनिटी एंगेजमेंट आणि सर्व्हिस मध्ये काय केलं तो एक महत्वाचा. पेपर किती पब्लिश केले, किती FDP केल्या, किती क्वालिफिकेशन वाढलं ते राहू द्या म्हणतात. कम्युनिटी एंगेजमेंट मध्ये काय सहभाग आहे. सेम थिंग्स तुमच्या अभ्यासक्रमात एकही विद्यार्थी को करिक्युलर कोर्सेस नाव दिलेलं आहे, कम्युनिटी एंगेजमेंट फील्ड प्रोजेक्ट शिवाय त्याची डिग्री पूर्ण करू शकणार नाही. आता आपल्याला मेंटली फिजिकली आता ओपन झालं पाहिजे. लक्षात घ्या मित्रांनो, आपण खेड्यापाड्यात गेलो तर आपण 4 पुस्तकं शिकले, आपण फार शहाणे असं समजू नका. आपल्याकडे 4 डिग्रीज असतील पण शहाणपण खेड्यात असतं. तुम्ही जर खेड्यातल्या लोकांशी खरोखर एंगेज झालात, इतका फायदा होतो. ते वेळ पांघरून पेडगावला, त्यांना सगळं माहिती असतं, ते तुमची मजा घेत असतात. तुम्हाला त्यांच्याशी एकरूप होऊन व्हॉट इज विजडम, इंटेलिजन्स इज डिफरंट, विजडम प्रिव्हेल्स ओव्हर इंटेलिजंट. एखादा इंटेलिजंट असेल पण तो जर वाईज नसेल तर ती वाघाची गोष्ट आहे. तसं होतं, 4 विद्वान लोक जात असतात, हिसाब नीतीतली गोष्ट आहे. एक वाघ मरून पडला असतो, हे 4 सगळे विद्वान, त्यांना मध्ये मेलेल्या जीव ओतायची त्यांच्याजवळ कॅपॅसिटी असतात. ते म्हणतात अरे वा, छान एक्सपेरिमेंट आहे, हा वाघ आहे, आपल्याला शिकलेलो आहे, आपण या वाघावर प्रयोग करू, त्याला जिवंत करू. एक जण त्याचे जे काय पाय वाय तुटले असतात तो त्याचा एक्सपर्ट असतो, पटपट पाय जोडून अवयव जोडून देतो, खुश टाळ्या पडतात उरलेल्या तिघांकडनं. दुसरा म्हणतो की ठीक आहे, आता मी त्याचा श्वास आणून देतो. मग चौथा म्हणतो बस बस, ह्याच्या पुढचं करू नका. तो म्हणतो अरे माझं ज्ञान दाखवायला तू नाही म्हणतो, तुला येत नाही म्हणून चल पळ. तो म्हणतो ठीक आहे, तो चालला जातो, झाडावर बसतो. तो तिसरा त्याच्यामध्ये एनर्जी आणतो. मग वाघ आणि ते तिघ काय झालं असेल आपण समजून घ्या. इंटेलिजंट चालत नाही. कधी कधी आपण मेलेला वाघ जिवंत करून तो स्वतःला खातो. त्यामुळे इंटेलिजन्स सोबत विजडम हवं असतं. आणि हे विजडम हे सोशल नेटवर्किंग मधून येत असतं. सोशल नेटवर्किंग म्हणजे व्हॉट्सअप नाही. सोशल नेटवर्किंग मध्ये तुम्ही तुमच्या परिसराशी, झाड अनेक गोष्टी तुम्हाला शिकवून जातो, आपल्याला प्राणी अनेक गोष्टी शिकवून जातात.
खेड्यापाड्यातले लोक अनेक गोष्टी शिकून जातात. शेगावच्या मंदिराचं व्यवस्थापन पाहायला हार्वर्डची टीम येते. आता हार्वर्ड मध्ये काय बिझनेस स्कूल्स मध्ये काय कमी विद्वान आहे, पण विजडम कमी पडतं शेगावच्या मंदिरात पाहायला येतात. तिथे कळतं की व्हॉलेंटरिझम म्हणजे काय. तिथे तर असं आहे की पैसे टाकले आणि काम घ्या. इथे लक्षात येतं पैशाच्या पलीकडे जे काम करतात ते जे मोटिवेशन असतं, त्यातून जे काम असतं ते जर पाहायचं असेल तर ते शेगावच्या मंदिरातच येऊन शिकता येतं. त्यामुळे मित्रांनो आपल्याला हे पण शिकायचं आहे. सर वेळ झाला की मला सांगाल, माझं लक्ष राहत नाही. आहे अजून अर्धा तास आहे. मित्रांनो इंटर्नशिप ही मॅन्डेटरी केलेली आहे. तुम्ही एक सेमिस्टर पूर्ण तुम्हाला एक्सपेरियन्शियल लर्निंग साठी इंटर्नशिपला जायचंच आहे. प्रिपेअर करा आतापासून. तुमचे जे कॉन्टॅक्ट असतील, तुमच्या टीचरचे जे कॉन्टॅक्ट असतील, उत्कृष्ट ज्याच्यात तुम्हाला करिअर करायचा इंटरेस्टचा विषय असेल, शक्यतो त्या विषयात जर तुम्हाला इंटर्नशिप मिळाली, प्रत्यक्ष कार्यानुभव मिळाला, अनुभवातून शिक्षण, एक्सपेरियन्शियल लर्निंग सगळ्यात जास्त महत्व दिलेलं आहे. इथे तुम्ही वर्गातच शिकलं पाहिजे असा अट्टाहास मुळीच नाही. NEP मध्ये तुम्ही व्हॉट इज युअर मोड ऑफ लर्निंग, वेदर यू लर्न इन क्लासरूम, इन फेस टू फेस, इन ऑनलाइन, open distance, in blended or experiential, mode of learning is not important. Neither teacher is at the center. It is all about learning and learning outcome. Very clearly what are expected learning outcomes they are given, and you have to demonstrate that I have attained those outcomes, then you will get the degree or your, you can say, credits. I will not use the mark. So this is what is expected. Innovation. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, एज ऑफ कॉम्पिटिशन इज ओव्हर. इट इज द एज ऑफ पार्टिसिपेशन अँड कोलॅबरेशन. सो कोलॅबरेटिव्ह लर्निंग, पार्टिसिपेटिव्ह लर्निंग, डोंट कम्पीट. एक्स ला किती मार्क मिळाले आणि वाय ला किती मार्क मिळाले, गॉन. सगळं ग्रेडिंग वर येत आहे. एक 90 ते 100 सगळे एकाच सारखे आहेत, 80 चे 90 सगळे एका सारखे आहे, एकच ग्रेड मिळणार आहे सगळ्यांना. प्लीज डोंट कॉम्पीट. तुम्हाला एका विषयात चांगलं एक्सलंट मिळालं, दुसऱ्याला दुसऱ्या मिळेल, ती त्याची गती असलेली आहे. व्हॉट इज ए मोर इम्पॉर्टंट इज, ज्याला ज्याच्यात गती आहे त्याच्याशी कोलॅबरेट करा, पार्टिसिपेट करा. अँड पार्टिसिपेटिव्ह अँड कोलॅबरेटिव्ह, सो होल सिस्टीम will get changed towards that. Global citizenship education. In our education, as of today, global perspective is totally absent. And tomorrow you are not the citizen of Shegaon College. You are not the citizen of Maharashtra state. You are not only the state of nation India, but you are the विश्वची माझे घर. जय जगत. NEP तुम्हाला जय जगतचा नारा देते. ते म्हणतात की ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह हे तुम्हाला आत्मसात करायलाच पाहिजे. त्यामुळे ग्लोबल एज्युकेशन, ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह हा सुद्धा तुमचा एक कंपोनंट राहील. क्वालिटी एज्युकेशनचे तुम्हाला काय नेमकं करायचं आहे, तर ॲप्रोप्रिएट करिक्युलम ते कॉलेज विल टेक केअर ऑफ. ॲप्रोप्रिएट पेडागॉगिज कसं शिकवलं पाहिजे नवीन पद्धतीत, your faculty will take care of. Continuous assessment, so it will be era of formative assessment, continuous assessment. High stake examination, end examination will not have very high weightage. Weightage of your assessment will be continuous assessment. आणि meaningful opportunities for social engagement and goal of global quality standard. Everything you will be prepared for global perspective. Quality standards are global standard, and high stake examinations will be taken away. And what is important is whether you have attained expected learning outcome or not. So every time you will be given learning outcome, and at the end you will be tested. सपोज सर आपला पिरियड घेतात आहेत, एखाद्या युनिट मधले 2 बिट्स मिळून एक सेशन होणार आहे 2 तासाचं. बिफोर एंगेजिंग टीचर विल टेल यू
की माझ्या या सेशन मधनं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हे 4-5 आहे इंटेंडेड, आणि ते सेशन संपलं की समजलं का वगैरे नाही. देअर विल बी स्मॉल असेसमेंट अँड इफ यू डेमॉन्स्ट्रेट अटेनमेंट देन यू विल गेट क्रेडिट, अदरवाइज नॉट. मी अब्सेंट होतो सर, तुमच्या घरी ते एक व्हिडिओ पाठवून दिल्या जाईल, तुम्हाला रात्री 12 पर्यंत सर टेस्ट पाठवतील, ती तुम्हाला आन्सर करावे लागेल. तुम्ही घरी बसून शिकले की वर्गात शिकले इम्पॉर्टंट नाही. सरांना जे हवं होतं ते लर्निंग आउटकम तुम्ही आलं तर पुढे, नाही आले तर पुन्हा शिका. दॅट टाइप ऑफ सिस्टीम विल कम नाऊ. व्होकेशनल एज्युकेशन संपूर्ण रिवॅम्प होणार आहे. तुमच्या सिलेबस मध्येच इंटिग्रेट मोठ्या प्रमाणावर व्होकेशनल एज्युकेशन विल बी इंटिग्रेटेड इन युअर मेन स्ट्रीम एज्युकेशन. रिसर्च मध्ये अंडर ग्रॅज्युएट करिक्युलम मध्ये सुद्धा रिसर्च राहील. 4थं वर्ष युअर बी ऑनर्स विथ रिसर्च, एक विद्यार्थी बी करतानाच रिसर्च कंपोनेंट घेऊ शकेल आणि त्याला एमई न करता पीएचडी ला जाता येईल. इमॅजिन सम स्टुडंट हायली इंटरेस्टेड इन रिसर्च, त्याला एमई चे 2 वर्ष घालवायची गरज नाही. त्यांनी बीई केलं, बी विथ ऑनर्स विथ रिसर्च केले, 20 क्रेडिट जास्त मिळवले. विदाउट डुईंग एमई ही कॅन गो फॉर रिसर्च. सच टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विल कम. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे पार्ट आता जे तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे. जुनी सिस्टीम आणि नवीन सिस्टीम मधला मेन फरक आहे, आता तुम्हाला मार्क करायची फार जोर नाही. इट विल बी कम्प्लिटली व्हॉट यू विल गेट इज क्रेडिट. सेकंड थिंग, वेदर यू आर इन फर्स्ट इयर देअर विल बी मल्टी एंट्री मल्टी एक्झिट, तसं आपल्याला अपेक्षित नाही आहे. अनफॉर्च्युनेटली एखाद्या विद्यार्थ्याने पहिलं वर्ष पूर्ण केलं आणि त्याला सोडावं लागतंय, ही विल गेट सर्टिफिकेट दॅट स्टुडंट. पहिले काय व्हायचं, मला माहिती आहे स्वतःला 40 वर्षामध्ये अनेक विद्यार्थी फायनल पर्यंत यायचे, पण एखादा सेकंड इयरचा विषय पास नाही झाला म्हणून, किंवा घरी काही अनेक ग्रामीण मुलींची लग्न करून टाकायचे त्यांचे पॅरेंट्स, म्हणून त्यांचं 4थ्या वर्षाला शिक्षण सुटायचं, किंवा अनफॉर्च्युनेटली वडिलांची डेथ झाली, काही झाली, त्या मुलाचं शिक्षण सुटायचं. पण व्हायचं काय, त्यांनी 3 वर्ष पूर्ण केली पण 4थं वर्ष नाही केलं तर त्याला एखाद्या सापशिडीच्या खेळासारखं तो त्याचं स्टेटस 12वी. मग त्याचे 3 वर्षाचं काय, तो शिकलाय ना. देअर वॉज नो व्हॅल्युएशन ऑफ दिस 3 इयर. डायरेक्ट तो 12वी स्टेटस यायचं. एनईपी मध्ये तसं होणार नाही. दॅट इज द फ्रेमवर्क अँड सगळं आउटकम बेस्ड एज्युकेशन मध्ये होणार आहे. एव्हरीथिंग विल बी आउटकम. म्हणजे आपण रफ भाषेत बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर, ती व्यवस्था म्हणजे आता एनईपी मध्ये येणं. मग तुमचा काय फायदा आहे त्याच्यात, हे डॉक्युमेंट जस्ट लक्षात राहू द्या. तुम्हा लोकांना प्रत्येकाला आता क्रेडिट मिळवायचे आहे. प्रत्येक जिथे तुमचं शिकणं होईल, म्हणजे आज आता तुम्ही ह्या इंडक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करताय, दॅट विल बी यू विल क्रेडिटाइज फॉर दॅट. जिथे जिथे लर्निंग होतं, जिथे जिथे तुमचं अटेनमेंट तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेट करता, जिथे जिथे तुमचं असेसमेंट होतं, मग ते एनएसएस असू द्या, पोस्टर प्रेझेंटेशन असू द्या, किंवा स्पोर्ट्स असू द्या, गॅदरिंग असू द्या, wherever learning happens, there you will get the credit. क्रेडिट म्हणजे काय, इट इज द मेजर. एक जसं आपण किलोग्रॅम लिटर जसं एक मेजर असतं, तसं अभ्यासाचं कोर्स वर्कचं मेजर म्हणजे ते क्रेडिट आहे. ते क्रेडिट कशाची लिंक केलेलं आहे, ते 4 गोष्टीची लिंक केलेलं आहे. मित्रांनो, आता तुम्ही लक्षात घ्या, हे तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं आहे की तुम्ही किती तास लर्निंग केलं, एक तो पॅरामीटर आहे. मग लर्निंग कुठ्यातून होतं, वर्गात बसल्यानेच होतं का, नाही. वर्गात बसल्याने तर निश्चित होतं. लॅब मध्ये केल्याने होतं का, होतं. फील्ड वर्कला गेल्याने होतं का, होतं. आणि मी घरी बसून युट्यूब वर शिकलो तर होतं का, आजपर्यंत नव्हतं, आता होतं. मी जर 40% अभ्यासक्रम, एक मूक नावाची व्यवस्था आहे, मासिव ऑनलाईन ओपन कोर्सेस, एक स्वयं नावाचा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा एनपीटीएलचा एआयसीटीचा प्लॅटफॉर्म आहे. आता महास्वयं येत आहे, उद्या कदाचित कोर्सेरा येतील, काही युट्यूबच्या येतील.
तुम्ही त्यातून जरी शिकले त्याचंही तुमचं लर्निंग झालं असं समजण्यात येईल. फक्त तुम्हाला त्याचं रेकॉर्ड ठेवावं लागेल. म्हणजे आजपर्यंत क्लासरूमचं रेकॉर्ड टीचर ठेवत होते, लॅबोरेटरीचं रेकॉर्ड टीचर ठेवत होते. तसंच तुम्ही टर्मवर्क आणि होम लर्निंग आणि सेल्फ लर्निंगचा रेकॉर्ड तुमचं तुम्हाला ठेवायचा आहे. प्रत्येकाला आपली आपली एक पोर्टफोलिओ तयार करावा लागेल. मला पहिल्या सेमिस्टरला 5 विषय आहेत, त्या मी 5 विषयातलं घरी काय काय केलं, मी असाइनमेंट दिले होते सरांनी, किती घरी वेळ दिला, टर्मवर्क होतं किती वेळ केला, मला सरांनी काही स्वयंचा पाहून यायला सांगितलं होतं, मी किती वेळ पाहिलं, सरांनी मला काही युट्यूब सांगितल्या होत्या की या वाचू द्या उद्या, मी किती वेळ पाहिल्या, सरांनी त्यांचा व्हिडिओ काढून पाठवला होता लेक्चरचा, मी किती वेळ पाहिला. यू कीप द रेकॉर्ड बिकॉज your learning hours are required to earn you credit. म्हणजे एक आहे तुम्ही किती तास अभ्यास केला, लर्न केलं. दुसरं असं आहे की तुम्ही जे लर्न केलं त्याचे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम काय होते. प्रत्येक शिक्षकाला कोर्स तयार करताना, पिरियड घेताना, प्रॅक्टिकल घेताना, तुम्हाला होमवर्क देताना एक गोष्ट सांगावी लागेल की व्हॉट इज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम. ते दिलं नाही तर तुम्ही सरांना सांगा की सर मराठे सर म्हणत होते ते एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम शिवाय शिकू नका, तुम्हाला क्रेडिट मिळणार नाही. सर तुम्ही असाइनमेंट दिलं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम काय आहे. सर मला सेमिनार करायला सांगितलं, एक्सपेक्टेड लर्निंग काय आहे. सर तुम्ही आम्हाला प्रोजेक्ट वर्क दिलं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम काय. सर तुम्ही आज शिकवताय, एक्सपेक्टेड लर्निंग काय. एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकमला मग तुमचं असेसमेंट झालंच पाहिजे. मग मी NSS ला गेलो तरी असेसमेंट झालं पाहिजे, फील्ड वर्कला गेलो तरी झालं पाहिजे, इंडस्ट्रियल टूरला गेलो तरी झालं पाहिजे, इंटर्नशिपला गेलो तरी झालं पाहिजे, गॅदरिंग मध्ये भाग घेतला तरी झालं पाहिजे, स्पोर्ट्स मध्ये भाग घेतला तरी झालं पाहिजे, मी घरी जो अभ्यास केला त्याचंही झालं पाहिजे. क्रेडिट मिळवायची दुसरी रिक्वायरमेंट आहे असेसमेंट. असेसमेंट बाय कोण? कॉम्पिटंट अथॉरिटी. कोण आहे कॉम्पिटंट अथॉरिटी? तुमचे टीचर, तुमचं कॉलेज आणि विद्यापीठ आणि स्वयं, किंवा इंटर्नशिप केलं तर ती इंडस्ट्री. एखाद्या मी दुकानात कोर्स केला आणि सर्टिफिकेट आणून दिलं, इट वॉन्ट वर्क. आजपर्यंत चालत होतं, इंटर्नशिपचे खोटे सर्टिफिकेट अनेक MBA चे मुलं आणून द्यायचे. आता ते चालणार नाही. ते म्हणतील ठीक आहे, आणलं ना तुझा पोर्टफोलिओ आण, मी परीक्षा घेतो तुझी त्याच्यावर. दॅट इज मस्ट. आणि तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अटेनमेंट ऑफ आउटकम, या 4 गोष्टी झाल्या की तुम्हाला क्रेडिट मिळतील. काय काय? किती अवर्सचं लर्निंग होतं, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम होते ते तुम्ही अटेंड केले का, तुमचं असेसमेंट झालं का, असेसमेंट कॉम्पिटंट अथॉरिटीनी केलं का, आणि त्या कॉम्पिटंट अथॉरिटीनी तुम्ही अटेंड केलं हे सांगितलं का. एवढ्या गोष्टी झाल्या की तुम्हाला क्रेडिट मिळतात. क्रेडिट कशातून मिळतात? जसं मी सांगितलं, प्रत्येक गोष्टीतून क्रेडिट. इतक्या कम्युनिटी एंगेजमेंट क्रेडिट, स्पोर्ट्स क्रेडिट, NSS क्रेडिट, कल्चरल प्रोग्राम क्रेडिट, इंटर्नशिप क्रेडिट, वर्गात आणि प्रॅक्टिकलला तर मिळणारच आहे, होमवर्क क्रेडिट. ज्याच्या ज्याच्यात कराल त्याच्यात क्रेडिट मिळेल. तुमचे अल्टिमेटली तुमची लर्निंग स्कीम अशी राहील. आता त्यातले क्लासरूम इन्स्ट्रक्शन ते तर प्रत्येकाला माहिती आहे, आपण लहानपणीपासून क्लासरूम इन्स्ट्रक्शन आणि ट्युटोरियल्स करतोय. पण मी क्लासरूम मध्ये गेलो नाही, अब्सेंट राहिलो, तर काय, तर पटकन सरांना म्हणा सर आज वर्गात जे शिकवत आहात ते मला व्हिडिओ पाठवा आणि मी करीन. माझा ते शिकलेला हा माझा पोर्टफोलिओ, मला त्याचं आवर्स मी शिकलो म्हणून सर्टिफाय करा. प्रॅक्टिकल आणि शेवटचा बघा टर्म वर्क अँड सेल्फ लर्निंग, आणि त्याचे आवर्स बघा, 42 आवर्स क्लासरूमचे आहे तर 36 आवर्स सेल्फ लर्निंगचा आहे. ओनर्स ऑफ लर्निंग इज ऑन यू नाउ. मला सरांनी शिकवलं नाही, आमचा पिरियड झाला नाही, आमच्या सरांना शिकवताच येत नाही, हे रडगाणे बंद. हे सगळे फॅसिलिटेटर आहेत, शिकायचं तुम्हाला आहे. जेव्हा तुम्हाला फ्लेक्सिबिलिटी दिली, स्वातंत्र्य दिलं, त्याच्यासोबत जबाबदारी आली आहे आणि तुमचे क्रेडिट
120 तास शिकले तर 4 क्रेडिट, 60 तास शिकले प्रॅक्टिकल असल्यामुळे 2 क्रेडिट. असं तुमच्या लर्निंगला क्रेडिट मध्ये केलाय आणि एका सेमिस्टरला तुम्हाला किमान 600 तासाचं लर्निंग आणि 20 क्रेडिट मिळवायचेच आहे. 1 वर्ष याचा अर्थ आता 1200 तासाचं लर्निंग आणि 40 क्रेडिट. 1 सेमिस्टरचा अर्थ 600 तासाचं लर्निंग आणि 20 क्रेडिट. प्रत्येकाने ही काळजी घेतली पाहिजे की माझे 600 तास लर्निंग, तेव्हाच तुमची डिग्री होते ती सेमिस्टरची, तेव्हाच तुम्ही एलिजिबल होता 20 क्रेडिट साठी. व्हॉट इज द टेक अवे फॉर माय डिअर स्टुडंट? that 1 year means 1200 learning hours and 1200 learning hours म्हणजे 40 credits. 1 semester means 600 learning hours and 600 learning hours means 20 credits and there are 15 weeks per semester. So 1 week means 40 learning hours. Ensure that your every week will show your 40 learning hours. Now if classes are whatever may be the reason, put it in your portfolio file. At the end of the semester, you will have to prove that I have learned for 600. Teachers have assessed me. I have known what are the outcomes and I have demonstrated attainment. Then you will be eligible to earn 20 credits. This is the meaning of autonomy. आज विद्यापीठ हे सगळं पाहू शकत नाही म्हणून व्यवस्था म्हणते प्रत्येक कॉलेजने ऑटोनॉमस व्हा. ऑटोनॉमस व्हा म्हणजे अकॅडमिकली प्रत्येकाला हे पाहायचं आहे. डोंट शाउट ऑन टीचर अँड सिस्टम इफ दे से दॅट नो यू कांट अर्न 20 क्रेडिट. इफ यू डोंट अर्न 20 क्रेडिट, it means you have not completed your 1 semester. 20 credits means 600 hours. It means 40 hours per week. So your college you may have 28-30 hours, but 10 hours you have to maintain in your portfolio. College has taken 30 hours. In my self-learning I have done 10 hours. So in a week I have completed 40 hours. This is what is the system which will be coming in terms of credit system. Friends, as I was saying, there will be multi-entry, multi-exit. I don't want anybody to live in between. But somehow, after 1 year, that is after earning 40 credits, somebody leaves, that student will get certificate. After 2 years, that is 2400 learning hours and 80 credits, student will get diploma. After 3 hours, that is 3600 learning hours and 120 credit, student will get 3 years degree, BWOC in mechanical engineering, BWOC in computer, and after 4 years, either student will get B after earning 162, 172 credits. Accordingly, 4 years degree will be there. So at each level, if required, student can take exit, and within 7 years, student can come back and again join next level. This type of flexibility will be there. Now, as I was saying, you will be learning only 50% of your real course and remaining 50% will be on what? So there will be major minor courses, ability enhancement courses, Indian knowledge system, yesterday you had a good session, then value education courses and open elective courses. I will tell you the beauty of open elective courses, vocational courses, life courses, there is nothing like extracurricular and internship and field project. You will have various options. You are in multidisciplinary education, so you will take major. Suppose first year you have taken admission in mechanical engineering. यार मला तो computer शिकायचं होतं. Okay, you take major as mechanical, minor as computer. You will have both the degrees. Beautiful. Not only that, somebody is interested like Shankar Mahadevan or Anil Kumble. I take major in electronics engineering and minor music. Is it feasible? Answer is yes in NEP. Earlier was it possible? Answer is no. मी लहानपणीपासून ते नृत्य डान्स शिकतोय, कथक शिकतोय. I want to do some career in that. No problem. Be computer engineering and minor in performing arts. Is it possible? Answer is possible. So this type of education will come and you will find 50% of the credit are to be taken on for
द सब्जेक्ट इन विच यू आर टेकिंग मेजर. रिमेनिंग 50% केवढा मोठा आहे, तो कशातून शिकू आपण? IKS मधनं शिकू, इलेक्टिव्ह मधनं शिकू, व्होकेशनल इंटर्नशिप मधनं शिकू, रिसर्च प्रोजेक्ट मधनं शिकू. हे आहेत मेजर, मायनर, IKS, एबिलिटी एनहान्समेंट कोर्स, VSCC, व्हॅल्यू एज्युकेशन, को करिक्युलर. हे सगळे आता कोर्सेस म्हणजे तुमचं 4 वर्षाचं सिलेबस आहे. आणि प्रत्येकाची, जसं आता फास्ट मध्ये सांगतो मी, मायनर मेजरचे तर 50% घेणार आहोत, मायनरचे 18-20 आहेत. आता मायनर मी कुठला घेऊ शकतो? तर इंजिनिअरिंग मधलं दुसरं डिसिप्लिन घेऊ शकतो, किंवा इट कॅन बी फ्रॉम डिफरंट फॅकल्टी ऑल टुगेदर. मला इंटरेस्टेड आहे मेकॅनिकल आणि सायबर सिक्युरिटी मध्ये. लहानपणीपासून मी मला काड्या करतो कॉम्प्युटरला घेऊन. हॅव युअर मेजर मेकॅनिकल, मायनर सायबर सिक्युरिटी, वाय नॉट? सो इट कॅन बी फ्रॉम इंजिनिअरिंग ऑर ऑल टुगेदर. सर मला शेअर मार्केट मध्ये इंटरेस्ट आहे, आमच्या घरी शेअरचा बिझनेस आहे. ओके, टेक मेजर in you can say electronics engineering, minor in related to share market, whatever commerce subject is there. So like that combinations are possible and you have to earn credits. मी फक्त महत्वाचं सांगतो ओईचं आणि मग पुढे जाऊ. ओई म्हणजे ओपन इलेक्टिव्ह and it is to be chosen compulsorily from faculty other than that of major. आता आपण सगळे इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आहोत. MBA वाल्यांना थोडं माफ करून, आपल्या सगळ्यांची फॅकल्टी सायन्स आणि इंजिनिअरिंग आहे, पण आपल्या कॉलेजमध्ये MBA आहे, आपल्याकडे कॉमर्स आणि मॅनेजमेंटची पण फॅकल्टी आहे. आता फ्युचर कशात आहे, तुमचा जॉब रोल कशात आहे? तर कॉम्प्युटरचं नॉलेज, सॉफ्टवेअरचं नॉलेज, पण डोमेन फायनान्सचं, बँकिंग मध्ये, इन्शुरन्स सेक्टर मध्ये, डिफेन्स सेक्टर मध्ये, कदाचित फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये म्हणजे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्ये. मी समजा सिव्हिल इंजिनिअरिंग आहे, माझं सिव्हिल इंजिनिअरिंग कुठे कुठे लागू शकतं? इंटेरियर मध्ये लागू शकतं. कदाचित माझा सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं नॉलेज पॉवर सेक्टरला पण लागू शकतं. मग मी ओपन इलेक्टिव्ह कसा घेतला पाहिजे? इमॅजिन, मी एकच एक्झाम्पल कॉम्प्युटरचं घेतो, कारण बहुतांश मुलं आजकाल कॉम्प्युटर करतात, पण त्यांचं करिअर स्वतःचं कॉम्प्युटर मध्ये नावाचं करिअर नसतं. दे वर्क इन सम अदर डोमेन. आयदर दे वर्क इन, you can say, finance, or they work in power, or they work in manufacturing. So this is how their computer knowledge is correlated with some other domain. मला जर फायनान्स मध्ये जायचं आहे, किंवा मला असं दिसतंय की माझं कॉम्प्युटरचं नॉलेज, कारण आता ऑडिट, डिजिटल ऑडिट मॅन्डेटरी केलाय प्रत्येक बँकेला, त्यामुळे मला सिक्युरिटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू, सायबर सिक्युरिटीनी त्या सेफ्टीसाठी मला व्हायचं आहे, तर तुम्हाला बँकिंगचं कोर नॉलेज आवश्यक आहे. मग मी कसं घेईन? मी मेजर घेईन कॉम्प्युटर आणि ओपन इलेक्टिव्ह घेईन मी बँकिंग. म्हणजे काय होईल की मी ओपन इलेक्टिव्ह मधनं बँकिंगचं मला डोमेन नॉलेज येईल, प्लस कॉम्प्युटर तर मी घेतलंच आहे, कॉम्प्युटर मधलं मायनर सिक्युरिटी घेईल. म्हणजे माझे फायनली मला काय व्हायचं आहे? मला एक कॉम्प्युटर प्रोफेशनल व्हायचं आहे, मला गुड इथिकल हॅकर व्हायचं आहे, मला सिक्युरिटी, सायबर स्पेसची सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करायची आहे, आणि बँकिंग आणि फायनान्स सेक्टरला फार मोठी सिक्युरिटीचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, म्हणून मला फायनान्स सेक्टरमध्ये कॉम्प्युटर आणि सिक्युरिटी घेऊन जायचं आहे. तर मी चूज कसं करेन माझी डिग्री? मी म्हणेन मेजर कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग, मायनर सायबर सिक्युरिटी आणि ओपन इलेक्टिव्ह बँकिंग डोमेन. और इन्शुरन्स मध्ये जायचं आहे, किंवा मला शेअर मार्केट मध्ये जायचं आहे, सेबी, मला तिथल्या सिक्युरिटीला वर्क करायचं आहे, किंवा मला मेडिकल प्रोफेशनल्सच्या डाटा सिक्युरिटी मध्ये जायचं आहे. सो आय विल, माझ्या घरात डॉक्टर्स आहेत, मी कॉम्प्युटर इंजिनियर होतोय, आणि मला डॉक्टर आमच्या घरच्या हॉस्पिटलला ज्या सिक्युरिटीज किंवा त्यांना जे लागतं त्या संबंधीचं मला व्हायचं आहे. मला लॉ मधल्या प्रोफेशन मध्ये जायचं आहे, कॉम्प्युटर होईल, आणि लॉ, सायबर लॉज वगैरेचं फार कमी प्रोफेशनल्स आहेत. आय विल टेक ओपन इलेक्टिव्ह फ्रॉम सायबर लॉ. नाउ अर्लियर दोज पॉसिबिलिटीज वेअर नॉट देअर. सी व्हॉट अ वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटीज आर देअर. तुम्ही तुमच्या करिअरचे शिल्पकार होऊ शकता. प्रश्न असा आहे, मला आजच कळलं पाहिजे मला काय व्हायचं आहे, मला आजच कळलं पाहिजे मला काय आवडतं,
मला आजच कळलं पाहिजे मला गती कशात आहे. माझं मला कळत नाही. दॅट इज वाय युअर फॅकल्टी इज देअर. दॅट इज वाय युअर होल प्रिन्सिपल ऑफ गिवन सच ए सिस्टीम फॉर दॅट. पूर्ण सिस्टीमचा रोल आता सपोर्ट सिस्टीमचा रोल आहे, फॅसिलिटेटरचा आहे. तुम्हाला करिअर काउन्सिलर मिळेल, तुम्हाला पर्सनल काउन्सिलर मिळेल. तुम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचून मदत घ्यायची आहे. तुम्हाला स्वतःला हे समजून घ्यायचं आहे मला मदतीची गरज आहे. तुम्ही जर म्हटलं मला काही गरज नाही, मला याची गरज नाही, मला मित्रांची गरज नाही, यू आर गॉन. तुम्ही आता आयसोलेशन मध्ये जगू शकत नाही. पण फॅसिलिटीज इतक्या सुंदर एनीपीनी तुमच्यासाठी तयार करून दिलेल्या आहे, ऑपॉर्च्युनिटीज इतक्या चांगल्या तयार केलेल्या आहेत. इंटर्नशिप मॅन्डेटरी केलेली आहे पूर्ण एका सेमिस्टरची, आणि त्या सेमिस्टर मधले 12 क्रेडिट तुम्हाला इंटर्नशिप मध्ये मिळतील आणि उरलेले 8 क्रेडिट ऑनलाईन कोर्सेस मधून घ्यायचं आहे. मला 7व्या किंवा 8व्या सेमिस्टरला इंटर्नशिप घ्यायची आहे. मला जर बँकिंग मधल्या सिक्युरिटीज जायचं आहे, तुम्ही आत्तापासून बँकेत मला इंटर्नशिप मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट यू हॅव टू डेव्हलप युअर ओन करिअर. पुन्हा मी एकदा सांगतो, पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या सिस्टीम मधला फरक तुम्हाला कदाचित माहित नसेल. युअर पॅरेंट्स विल नो, सोमानी सर अँड सिनियर फॅकल्टीज विल नो. अर्लियर when we used to go to somewhere, लग्नात वगैरे जेवायला गेलो ना, there was a system of पंगत. Whatever त्या होस्ट ज्यांनी तयार केलं असेल, यजमान आणि होस्टनी, त्याच्याकडे तयार केलेलंच तो वाढेल. आपल्याला बसायचं, तो आपल्याला आवडे न आवडे तो भसा वाढत जाईल. अरे अरे मला भूक नाही, खावंच लागतं. अरे दुसरा आहे का नाही, हेच केलं, हेच खावं लागेल. दॅट वॉज पंगत. आता तुम्ही जेव्हा जाता, चायनीजचा एक स्टॉल असतो, एक अजून पंजाबी डिशचा असतो, एक साऊथ इंडियनचा असतो. तुम्ही असे स्टॉलवर फिरता, मग ठरवता मला काय खायचं आहे. मग जाऊन थोडं चायनीज घेता, मग कुठे त्या पाणीपुरीच्या स्टॉलवर जाता, मग एखाद वेळेला तुम्हाला त्या 4-5 स्वीट पैकी एक घेता. तुम्हाला कुठलं जेवण आवडेल? पंगत आवडेल की बुफे आवडेल? काय आवडेल? आधीचं एज्युकेशन पंगत होतं. आम्हीच सिलेबस देणार, आम्हीच टीचर देणार, आम्हीच विषय देणार, आम्ही देऊ, हेच शिकलं पाहिजे. आणि आताचं शिक्षण म्हणजे बुफे आहे. तुम्ही ठरवा, सगळं लावलंय मल्टीडिसिप्लिनरी. तुम्हाला जे पटतं, तुम्हाला जे पचतं, तुम्हाला जे हवं आहे, उद्या ओरडू नका पोट बिघडलं. तुमच्या आवडीचं शिका. धिस इज व्हॉट इज एज्युकेशन, NEP. सो इन 4th year you have got again many options. तुम्ही मेजर मायनर घेऊन जा, किंवा डबल मायनर घ्या, किंवा मेजर आणि त्याच्यात ऑनर्स घ्या, ऑनर्स विथ रिसर्च करा. जे करायचं, फास्ट लर्नर अजून जास्त क्रेडिट मिळवू शकतो. स्लो लर्नर म्हणेल नाही मला पुष्कळ झालं, एक मेजर मायनर घेऊन मी बाहेर पडतो. ऑल ऑप्शन्स आर अवेलेबल इन 4th year. त्यामुळे तुम्ही इतक्या प्रकारच्या डिग्री सुद्धा घेऊ शकता. इतक्या सारख्या तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मोबिलिटी आहे, व्हर्टिकल मोबिलिटी आहे, मॅन्डेटरी 1 सेमिस्टर इंटर्नशिप आहे. सो मेनी थिंग्स आर कंपल्सरी. मल्टीडिसिप्लिनरी मायनर आहे. मग तुम्ही तुमच्या इंजिनिअरिंग मधलाही विषय मायनर घेऊ शकता, किंवा अन्य फॅकल्टीचा सुद्धा घेऊ शकता. तो तुमचा चॉईस आहे. म्हणजे आज जर शंकर महादेवांनी इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतली इथे, तर तो म्हणेल सर मी इलेक्ट्रॉनिक्स करतो, पण मला म्युझिक करायचं आहे. दुसऱ्याने घेतली तो म्हणेल सर एक टेम्पल मॅनेजमेंटचा विषय मायनर म्हणून घेतो. तिसरा म्हणेल मी क्रिकेटचा घेतो. इज इट फिजिबल, पॉसिबल? आन्सर इज यस इन NEP. जेनरिकचं मी तुम्हाला सांगितलं, सगळ्यात आवडीचा आहे. तुम्ही ठरवा, तो फॅकल्टीच्या बाहेरचाच घ्यायचा आहे. इंजिनिअरिंगचा विषय घेताच येत नाही, पण तो तुम्ही खूप वाईजली सिलेक्ट करा. OE मध्ये तुमचं करिअर बनवू शकतं, त्याला तो फार हेल्प करेल. इंटर्नशिप 12 क्रेडिटची आहे. Education in mother tongue. That's why I am speaking sometimes in Marathi, sometimes in English. So you also do not be shy. If you can express yourself well in mother tongue, be happy. What is important is you should be able to communicate it correctly, and you should be able to earn the knowledge, and you should be able to show the attainment. So competencies have to be demonstrated. So for that demonstration, knowledge barrier, they have removed it. So I think we will keep few minutes for question answer.
So, sir, I am sincerely thankful to you. You have really provided me very good opportunity. So, please accept my sincere thanks to you. Convey my thanks to management and sincere thanks to you, the audience, wonderful, enthusiastic young. कोणी मला असं झोपलेलं इथनं दिसलं नाही. That is the beauty. Generally, पोस्ट लंच सेशन मध्ये इथे उभं राहिलं की हे बरोबर इथून लक्षात येतं. पण मला आनंद आहे की आज कोणाची मान लुडकली नाही. त्यामुळे आय एम थँकफुल टू यू. इफ एनीबडी हॅज गॉट एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. एल्स वी कॅन कन्क्लूड जर प्रश्न नसतील. बेटा हे बॉटल ओपन करतो काय? हां, थँक्यू. हे घे बेटा काढून. हे घेतो काढ. Thank you so much, sir, for your insightful session. Your words have given us a better understanding of NEP 2020 and its impacts on our education system. Thank you, sir.